conference on From Plants to Patients, AI's Role in Natural Product Research, organized by Loknete Dr. Balasaheb Vikhe Patil, Padma Bhushan awardee, Pravara Rural Education Society's Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, conveyed by Dr. Manga Thayaru, K. Principal, PRCOP, Pravaranagar, coordinated by Dr. Sunaina Vikhe, HOD Pharmacognosy, and Dr. Rahul Godge, HOD Pharmaceutical Chemistry. So, before proceeding further, let us take an honor to introduce and felicitate our today's dignitary. So, with a huge round of applause, let us welcome each one of you present over here. To set the tone of today's session, let us begin the proceeding with the felicitation ceremony. We are privileged to have with us our today's eminent speaker with a great visionary. So, put your hands together for Dr. Shailendra Gurav, Sir, Professor, Goa College of Pharmacy, Panji, Goa. So, to do the honor of felicitation, I request Dr. Manga Thayaru ma'am to please felicitate Sir. Pravara fraternity, once again welcome you. I request Principal Manga Thayaru ma'am, please welcome sir. Good morning everybody, please settle down fast. So we have an eminent speaker, Dr. Shailendra Gurav from Goa College of Pharmacy. All of you had an energetic breakfast, I can see that. So come and settle down. She's introduced, I'll announce. Caller, right? Sir, comfortable with this mic? जास्त चांगलं म्हणजे हात फ्री राहील. स्लाइड चेंज माझ्याकडे द्या. त्याच्यामध्ये ANRF प्रवरानगर म्हणून फोल्डर आहे, त्याच्यामधलं फक्त PPT उचलायची. PDF फाईल मॅडमने ऑलरेडी दिलेली आहे. त्याच्यात ANRF प्रवरा म्हणून फोल्डर आहे आणि त्यातली फक्त PPT हे करायची, कॉपी करून घ्यायची. Staff to help them quickly settle down so that Student, please cooperate and settle down fast. Our speaker is waiting for you. without much noise, silently, sit wherever you find places.
Hello, hello, check. Hello, hello. Hello, 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 check. Hello. Okay. So without wasting much of the time, we have our eminent speaker with a great visionary with us, Dr. Shailendra Gurav sir. So to introduce sir, I would like to invite our M.Pharm student, Miss Sonal Gonkar. अरे यार हे It is a great honor and privilege to introduce our esteemed speaker for today's session, Dr. Shailendra Gurav. Dr. Shailendra Gurav holds a doctorate in Faculty of Medicine 2008 from RTM Nagpur University, Maharashtra, with 22 years of research and teaching experience, and currently is affiliated as a professor of Goa College of Pharmacy, Goa, India. He has more than 145 referred publications with cumulative impact factor of 415, 8 granted patents, 5 Indian and 3 international, 13 patents in pipeline and 2 PCT in his credit. He has published over 7 books in Springer, Valley, Elsewhere, Taylor and Francis and Nirali publication, and 32 book chapters in international publication. He has received a grant for more than 1.2 crore from various funding agencies, including Department PA Health Product Private Limited, Ankleshwar, Gujarat. Dr. Gurav is listed as an Elsewhere top 2% of scientists by the Stanford University UA 2025 and 24. He has been honored with APTI Dr. M.D. Khaire Award for the Researchers and Excellence in Pharmacognosy in 2025, the Distinguished Scientist Award in 2025 by the Society of Plant Research. He is also honored with an International Research Fellow of INTI International University, Malaysia. He has been awarded as a Senior Research Fellowship of ICMR and the Junior Research Fellowship of UGC, New Delhi, India. Other accolades includes Dr. A.P. Patel National Award for the Best Thesis in Pharmaceutical Science 2023 and the Best Professor in Pharmacognosy by the Business School of Affairs and Divang Mehta National Education Award 2019. To date, Dr. Shailendra has guided 37 M.Pharm students and 6 PhD students. Dr. Gurav has delivered over 74 lectures as a keynote speaker and resource person at various conferences and workshops at both national and international levels. His research area include national products research, nanomedicines, ethnopharmacology, Ayurvedic biology, herbal nanotechnology and computational biology. Dr. Gurav is a chairperson of board studies in pharmacy at Goa University, Goa, and a member of the board of studies in pharmacy at Savitribai Phule Pune University, Babasaheb Ambedkar Technology University, Raigad, Maharashtra, Amrutwaini College of Pharmacy, Sangamner, Maharashtra, and a research advisory committee member of Datta Mega Institute at Higher Education and Research, Varda, Maharashtra. He has been a vice president of APTI Goa State, and he has been actively engaged in a joint secretary of the Association of Pharmaceutical Scientists and Education since May 2020. He serves an advisory for the American Herbal Pharmacopoeia, editor for scientific reports in Springer Nature, academic editor for PLOS ONE, associate editor for Journal of Ayurveda and Integrative Medicines in Elsewhere, current Indian scientist in Betham, guest editor for 40 years in pharmacology, natural product communication, computational biology, editorial member,
and reviewer for several international journals. So I would like to ask you to give a round of applause for his expertise. Now I request our guest of honor to share his valuable insight with us on the harnessing AI to identify herb and drug interaction. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Huh? Hello. 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 Yeah. Can we put off the light, please? Light बंद कर दो. हाँ बंद कर दो. Slides will be not visible clearly. स्लाइड्स दिसले की बस झालं, मला बघायची गरज नाही आहे. त्याचा ब्राईटनेस वाढवा, थोडा ब्राईटनेस वाढवा. स्लाइड्स क्लिअर दिसणार नाहीत, नाही तर थोडा आवाज कमी कर. हे इथे बघतील का मुलं? ओके. ओके मॅम, हाऊ मच टाइम आय विल बी हॅव्हिंग? ओके, 45 to 50 minutes. ओके. Good morning, everyone. Hello, check. Hello. First of all, Hello. thank Hello. you. हॅलो. ठीक. थोडा वॉल्यूम कमी केला तरी चालेल. आवाज कमी करा, थोडा कमी करा. हॅलो. 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 थोडा कमी करा, कारण जास्त मलाच घुमतोय जास्त आवाज. हॅलो. 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 On the outset, I would like to thanks to the organizer for inviting me as a resource person for this conference. I think 1.5 months back, when Dr. Sunaina called me, that is, sir, already we have given your name as one of the speaker for the proposed conference. So I wondered how you gave my name without my consent for the same topic. So they said, सर आप तो हमारे घर के हो, तुम्ही घरचे आतमध्ये, तुम्ही कधी येऊ शकता, आम्ही तुम्हाला बोलवू शकतो हक्कानं. देन आय सेड ओके, बट आफ्टर रीडिंग द theme of the conference, then from plants to patient and AI's role in a natural product research, I was wondering now what to speak on that topic. So next question was, what are the topics of another speakers? Because if you see, that is one of the least explored area. We know only the review kind of work. Though one of the research area, that is a computational biology, it is one of my research area, but I always engage the lectures on the experimentation part, actual demonstration and all the things. And I don't think so this is a platform where I can demonstrate those techniques. So what to discuss with student? And if I am not wrong, most of the speakers, they must have discussed about how AI is playing a role in natural product drug discovery. Am I right? Everyone has spoke about the same. So I would like to thank to Dr. Principal Madam. She suggested me, why don't you talk about the herb drug interaction and role of AI in predicting the same? Then it clicked me. Yes, I can talk about that one.
Then again I went through some literature, I collected some material and then prepared the slides. Now it's just my small attempt to compile the data, whatever the data which I compiled, to present in front of you, and I will take all of you along with me in the journey of this presentation. Take- Okay. Oh, got it. Yeah. So, starting with this one, the title of the topic is Harnessing Artificial Intelligence to Identify Herb-Drug Interaction. Now, already we are familiar with the herb-drug interactions. Specifically, we know drug-drug interactions are there, but herb-drugs interaction is also there. Now, why there is a need of specifically focusing on a herb-drug interaction? If you see, specifically after COVID or even during COVID, most of the people, they incline towards the herbal drugs. They are believing that herbs are supposed to be safer. But I don't, but up to one concentration, and at the same time, what we need to do, we need to keep in mind while taking the two drugs together, whether there are any chances of interactions, and that is the area which is the least explored and not that much data is available in the public domain. It is one of the huge tasks that I will be talking about, how it is a huge task and how AI will be playing the role in the same one. These are the contents of my slide. So what actually I will be discussing, around 53 slides are there, 53 slides. So you will get the idea how much time you need to bear me. So the first one, that is the herbal drugs. What is the current scenario? Then what are the herb drug interactions? Challenges in identifying the herbal drug interactions. What are the challenges right now we are facing, and how AI can play a role in the same? Now when we are talking about the AI, then at that time, what are the key disciplines or what are the tools, different tools used by AI in identifying the same? Then how AI will exactly work in identifying the herb drug interaction with the help of a data acquisition and pre-processing? Then AI for predicting pharmacokinetics as well as the pharmacodynamics. Then what are the different models and approaches for the herb drug interactions, as well as what will be the different databases. I will be just give you the names of those databases which you can Google it and you can refer. Most of the some of the databases, they are the free, some are the paid one, but you can go through them. Then clinical implementation and future directions of the same, and what will be the conclusion and call to actions. So beginning with my presentation, rise of herbal medicines. As I mentioned, specifically during COVID and after COVID, there is a huge resurge in the use of global medicines. Is experiencing a global resurgence as an integral component of a traditional medicine. Now, why not only herbal medicines, but the use of a traditional medicines? If you remember, the name which came into focus at that time was nothing but a Patanjali. Most of us must have used the Patanjali products during COVID product, so-called Kada, then I think Karunil, Vati and all the things. Those Vatis were there. So all preparations, though they were the herbal preparation, but the base was a traditional base. So the herbal resurgence, it is not only use of only herbal medicines, but the base is of a traditional one. At the moment, millions worldwide use herbal remedies along with their conventional pharmaceuticals one. Now you can see the slide here. Different countries, they have different systems of medicine. India, China, Japanese. We know some Chinese systems of medicine. In case of a Japanese, that is Kampu systems of medicine. Different systems of medicines. So people, they are relying on those now. They are diverting theirs. Now coming to this slide, that is herb drug interaction. Instead of wasting the time about the herbal drug scenario, I will directly go for the herb drug interaction or the herb interaction. Now, what is the meaning of herb drug interaction? When natural meets pharmaceutical.
we are specifically talking about the herb and drug interactions, pharmaceutical drug rather than allopathic drug. What does that mean? These are the biological interactions between herbal remedies or the conventional drugs and pharmaceutical drugs. Now, why we need to focus on the same? Because it can lead to the unexpected health outcomes. Now, what kind of unexpected outcomes will be there? Probably it will reduce the efficacy of an allopathic drug. It may lead to the toxicity or some unexpected side effects also. And these are due to overlapping of metabolic pathways. Means how exactly it's interfering with the action of other drug. Probably they are sharing the common metabolic pathway, and that is the reason. Herb drug interaction we know. We must have heard about a drug-drug interaction or adverse drug reactions, correct? Adverse drug reactions are different, side effects are different. What is the difference between adverse drug reaction and side effects? I would like to tell you one thing here. One of my PhD student, 2 months back only, she awarded with a PhD, and she worked on the pharmacovigilance of some drug. Pharmacovigilance. Her area was a pharmacovigilance. What is the role of, what is the job of a pharmacovigilance? They are monitoring the adverse drug reactions of drugs. Correct? Now, drugs, those are not only herbal drugs, they are about specifically about the allopathic drugs. Several pharmacovigilance centers are there nationwide. So, she worked on the specific topics. She selected different departments, pediatric department, then dermatological department, then respiratory medicines, respiratory department, and she tried to find out which are the common drugs and what will be the associated adverse drug reaction arising from the use of those drugs, which were not reported. Specifically from Goa region we collected, and we published almost 5 papers in good impact factor journals. Even we were communicated by WHO for the reporting of the same. And that was a complete new and wonderful study. Why I am specifically talking about this? Adverse drug reaction, side effect, these are the two different terms. Side effect, they are expected. When we are taking a paracetamol in high dose, we know the acidity will be there, it is side effect. But adverse drug reaction, it is not predicted. So I will just show you some examples. Okay. Adverse drug reaction. You must have heard this syndrome, phenobarbital hypersensitivity syndrome. Just imagine what would be the situation of that patient, what pain he must have gone through. This is the phenobarbital hypersensitivity syndrome. Why I am specifically showing these images? So you will get the idea what could be the implications of interactions, even in case of herb drug interactions. Why it is not working properly? Propylthiouracil hypersensitivity vasculitis. Stevens-Johnson syndrome. You must have heard this term. Yeah, it's okay now. Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome. These are the adverse drug reactions. Toxic epidermal necrolysis. You are not even situation to see these images. So just imagine what would be the situation of the patients who must be going through this pain. Now the important thing is, now coming back to the herb drug interaction, why there is a concern for those herb drug interaction? What are the hidden risks? Or what are the patient safeties which are at stakes? Generally, the drugs, herb drug interaction are significant patient safety concern.
it can lead to a treatment failures for serious conditions like cancers or cardiovascular disease or worse, severe adverse drug reactions. Even herb drug interactions may lead to the adverse drug reaction. The images which I shown to you, it can, even herb drug interaction also, it can lead to those symptoms. And most surprising thing, those challenges are often unrecognized. Even in case of adverse drug reaction, until and unless they are not reported, you will never come to know. The several factors are there why it is not getting reported timely. Common examples of a herb drug interaction. Common examples. Classic example is a St. John's words. There is a name. Name of drug is a Hypericum perforatum. This is the name of drug. Now, it reduces the effectiveness of oral contraceptives and warfarin. Even it leads to serotonin syndrome with antidepressant, ginkgo biloba drug, which is increasing bleeding risk with anticoagulants. Now, and these are not rare occurrences, they are happening regularly, just we are not paying attention toward them. Forget about those, that St. John's words. You know the garlic, correct? It is advised that garlic shall never taken with the paracetamol, even aspirin. No, it is not advisable. Licorice drug. What is licorice? Glycyrrhiza glabra. Jeshtu mad म्हणतो आपण, बरोबर आहे? Okay. What is generally it is used for? Correct? But you know, it lead to hypokalemia. Hypertension patient, BP patient, they should never take it. In low concentration, it's okay. But if that patient is regularly consuming it, then it will lead to the severe problems. So it should be avoided. Some examples are there. St. John's wort with oral contraceptives, ginkgo drug, blood thinner, garlic plus aspirin, and kava and sedative. I will tell you that is St. John's wort, that is Hypericum perforatum, how it is supposed to be most common example. In subsequent slides, I will tell you how actually it's working and how it's leading to those interactions. Now the thing is, what are the different challenges in identifying those herb drug interaction? Yes, we now decided we need to focus on those herb drug interaction, but really is it easy? What are the challenges in the same? These two images you can see, one is the complex one is the simple one, correct? This plant extract, the structure itself shows it is a multi-component one. Number of phytoconstituents, they will be more. In case of a pharmaceutical drug, probably it will be 1 or 2 maximum, correct? And that is the main reason in case of a herbal. Complexity of herbal products. Beyond a single molecule. Polypharmacology. In one way, what we are saying, as it is a multi-component one or the polyherbal formulation, they will be more effective because it will, of course, there will be side effects, but probably the side effect of one drug, it will be subsidized by the another drug. So that is the beauty of the polyherbal formulation. But it is creating the problem in case of predicting or identifying herb drug interactions. Unlike single compound drugs, herbs are a complex mixture of hundreds of phytochemicals. And because of that, specifically which constituent is responsible for a herb drug interaction is difficult to identify. And that is the reason, or the main reason, that is complexity of herbal drugs for the identifying the, or the main challenge in case of herb drug interactions. Next one, variability in herbal products. Variability in herbal products means raw material which we are procuring. Probably it is not cultivated or collected at the same time. Difference is there, no? You can see here batch to batch variation, inconsistent composition. Though the composition probably may be the same, but the amount, quantity, it will be different one. The chemical composition of herbal products varies widely based on the species, growing conditions, harvest time, and processing methods. This inconsistency make standardized research and prediction extremely challenging. That is one of the reason or one of the challenge in
identifying the herb drug interaction. Then the second one, lack of standardized reporting. Now tell me one thing, how many of us, when we are approaching to the doctor, we are telling them what kind of herbs actually you are taking? We are intentionally not disclosing that information to them, and that is the wrong part. And that is leading to the herb drug interaction. If suppose that clinician, the doctor, is not aware about what kind of herbs you are taking, as I mentioned, if some patient is prescribed with antihypertensive drugs and he is hiding, that is he is regularly licorice using, then it may create to the problem. So that is a lack of standardized reporting, under-reported, under-researched, the data deficit. Many patients don't disclose herbal use to their doctors or even their habit of a self-medication. It is intentionally not disclosed. And sometimes there is a problem with healthcare professional also. They even don't ask. Most of the time they even don't ask. And this leads to severe under-reporting of a suspected HDIs, leading our clinical data. Next thing is in vitro and in vivo challenges. Most of the times, even yesterday, while coming from Nasik to Pravaranagar, one of the student, Darshan, or what is the name of that? Durgesh. Oh, yeah, he was talking me, sir, most of our pharmacology or the pharmacognosy students, they are working on some drugs, and their main aim, or they are working in that direction, they will be exploring some pharmacological activity. So he was asking, really, is it necessary to go for the pharmacological evaluation only? I said, it depends on the problem statement. Our limitations, we have, most of the times we are going for the in vitro studies like antioxidant, antimicrobial studies, but it is not necessary. Those results will be correlated with the in vivo studies data. And that is the main challenge, in vitro versus in vivo challenge. Bridging the translational gap, lab bench to patient bedside, lab studies, in vitros. They can identify potential interaction, but these don't always translate to human body. Means that drug which behaves in one way in vitro state, but probably it will behave in a different way when it goes inside. The complexity of human metabolism and pharmacokinetics makes predictions tough, because in vitro simulated conditions are not there. Inside body, pharmacokinetics as well as pharmacodynamics, it will completely change the pattern. Next challenge, the scale of the problem. Even if we start identifying the herb drug interaction, the manual identification, that will be extremely difficult. The scale of the problem, you can see exponential complexity, number of herbs, number of drugs, and number of patients, because that drug probably it will behave in a different manner in a different patients. As per his physics or the PK and PD, it will be different for that drug, in particular that patient. So consider the sheer number of known herbs, prescription drugs, and individual patient variation. Manually assessing every potential interaction is a task beyond human capability. It is not possible only. And there our AI enters. There AI has a significant role. There how AI can help in a prediction of a herb drug interaction. Now the issue is really, as I mentioned, the scale of the problem. The data which is available, it is very less. So if you ask me, is it possible to go for the individual herbs and check with every drug whether herb drug interaction is there? I said no. Then how AI will help here? It depends on the chemoinformatics that I will discuss in subsequent slides. And we need a different approach, and that is nothing but a artificial intelligence. Now what is the meaning of AI? Probably in every day, not probably, every day we are using in some AIs in every aspect. I think most common AI which we are using, it is nothing but a GPS, correct? We are using every day. What is AI? It refers to systems that can perform tasks that typically require human intelligence. In short, learning, problem solving, and decision making. It's about enabling that computers, that machines to think like a human being, which is nothing but a artificial intelligence. Now,
AI also, they are using different weapons, different tools for their use. Now, what are those tools? NLP, that is a natural language processing, machine learning, and deep learning. These are the three main tools which will be used by AI, specifically in case of a herb drug interaction. Even several AI subfields are crucial for the HDIs. Now, how these tools will help? The first one, that is a machine learning. It helps to find the patterns. NLP, it will extract the information and text, and deep learning handles that complex hierarchical data like chemical structures. Now, how exactly it will work, that we can see. Power of a predictive modeling. If you see this image, the reaction is there, prediction is there. What we are actually doing, every time we are responding whenever that reaction occurs, means our response is after that incidence only. But if suppose we could predict that one, then we can avoid one. So instead of reacting to adverse event after they happen, AI will allow to proactively predict potential interactions before they occur. So in short, shifting our focus to prevention. Rather than treatment, we are going for the prevention. Data-driven insights. All of you must be using some AI tools, even Chat GPT or like that. You must be using that one, correct? Even if you are feeding some data, the answer you are getting, it is always different for all one. We are not getting the same answer. Why we are not getting the same answer always? Prompt. The data which we are feeding, in that AI term it is called as a prompts. The prompt which we are giving. So it is necessary to give the proper prompt. So in the same way, in case of AI, what is the AI's fuel? That is nothing but a vast data set. It thrives on a data. The more high quality, relevant data we feed it, from chemical structures to clinical report, the more accurate and insightful its prediction become. More chemical structure data. Now, how exactly AI will work here? Though it is not possible to go for the individual herbs and drug interaction, they will try to interpret the chemical structure, the chemical properties of that drug. Probably in next session, Dr. Abhay Gandhi sir is there. He's a postdoc and he has one unit also. Right now he is, just I discussed some time ago with him. Even he is providing some R&D of the formulations to MQR and like that. They are providing the formulas. So with the help of AI only, in silico studies only, they are predicting how the drugs can work in a different way, how the formulation can be changed, how the formulation composition can be different. Am I correct, Kandi sir? Yeah. So probably he will give you the more idea about the same one. So the important thing is what data you are feeding, and then you will be getting only the more accurate predictions. It is suppose in healthcare. In healthcare, how exactly AI is working right now? From diagnosis to robotic surgery as well as a drug discovery. It's a broader impact in medicine. In what way? It is already transforming many areas of healthcare from diagnostic and drug discovery to personalized medicines. So HDI prediction, it is supposed to be a natural and vital extension of this trend. Already in healthcare, AI is there, but HDI prediction, which is the upcoming area, and it can be the extension of the same one. The next part, that is AI data acquisition, literature mining with NLP. As I showed you, 3 different tools are there. That is the natural language processing there, then machine learning is there, and last one was there. So how these tools are helping to get the data? So in the same way, literature mining with this natural language process, please. It is for a scientific literature, natural language, cheminformatics, yeah.
how the herb drug interaction of in case of other drugs can be predicted based on the chemoinformatics. Now what is the chemoinformatics? That is utilizes computational tools to analyze chemical properties of a compounds and predict their behavior in a biological system. In pharmacognosy, you must be familiar with the chemotaxonomy, correct? What is the meaning of chemotaxonomy? We have seen the classifications, alphabetical one, pharmacological one, morphological classification, correct? So what we are doing, we are segregating particular drug as per their characters. Chemical classification is there, taxonomical classification is there. Taxonomic classification probably, for example, umbelliferae family is there, umbelliferae family, which are the different drugs, correct? Chemotaxonomy means what? There is a combination of chemical information and taxonomic relation. What does that mean? For example, digitalis purpurea, we know it is a cardiotonic drug, correct? Now the species of the same family, from the same taxa, digitalis lanata, it may also have the cardiotonic properties. I am just giving you the known examples, but in the same way, one can go for the prediction of properties of other drugs belong to the same family. That is the chemotaxonomics. In the same way, computational tools to analyze chemical properties of compounds. So in case of unknown drug for which as of now the herb drug interaction is not reported, but if the chemical properties and structure of that drug is similar, then there are the chances that it will give the same herb drug interaction. Millions of scientific papers describe the properties of herbs and drugs. Specifically during COVID, the vaccine which came, it was on very short period, no short notice, probably 6 months, 8 months time only. But in the meantime, if you Google or you can search several research papers, you will come to know repurposing of the drugs. Now what is the repurposing of drug? The drug which are already existed, which are in the market, how we can utilize the same in case of a COVID treatment. Now randomly we cannot go. So that time this AI, that's in silico studies, helped us. Chemical structure of particular that drug and the proteins or the targets which are associated with that SARS infection, COVID virus, they try to see based on the lock and key receptor models, and they try to predict whether those drugs can work in the COVID also. So billions of scientific papers describe the properties of herbs and drugs, and that is the main feed, or you can say that is a fuel of that particular AI. NLP algorithm can read and extract mentions of interaction, side effects and metabolic pathways for faster than any human being. And this natural language processing, which is nothing but one of the tool of AI, he will try to extract the information based on its properties, how that particular drug is behaves in a biological system, and the drug of the same properties, probably it will give the same kind of interactions. Database integration and curation. Now what kind of databases they are available for the integration of the same one? AI can integrate information from diverse database, which one chemical, biological, clinical and ethnobotanical, identifying overlaps and discrepancies and standardizing varied terminologies. Now which are the databases where you can get all the information about their drugs as well as their properties? So these are the drugs, these are the only few databases. More than 100 databases are right now available. You just Google it and you will get the information. There is a drug bank, PharmGKB, RxNorm, PubChem, Zinc, Superpred, CMAP, Uniprot and ReactMe. These are the few names only I am giving here. So you can go through these databases and you will get the information. Probably M.Pharm pharmacology as well as M.Pharm cognosy students are there. If I am not wrong, they must be working out on some in silico studies as well as the network pharmacology studies, correct? So in case of a network pharmacology studies, cytokapes and all the softwares are there which you can use freely for the same one. Chemical structure representation. Now in case of specifically while talking about the data acquisition and pre-processing, what data we need to feed in those databases? Simply if you know the chemical structure, simple chemical formula, chemical structure, you cannot put in that software.
So what you need to do, if people who are working in the network pharmacology area or the in silico, they must be aware about the smiles, that the form of that particular. So for AI to understand chemical interaction, it needs to see the molecules, not see, but the AI need to see in its own way, in the form of its own language. So we use various representations from smile strings to 3D molecular graphs, allowing AI to infer properties from a structure. Next one, metabolomics data processing. The most important thing in case of herbal drugs, that is nothing but chemical fingerprinting, chromatographic fingerprinting. So it will help analyze complex metabolomics data from herbal extract, which will help in identifying individual compounds, their quantification, and which is supposed to be crucial for understanding the variability of those drugs. So metabolomics, chemical fingerprinting, it is one of the data acquisition part in case of AI. Next one for data acquisition, omics data integration. Omics. Now what are different kind of omics? If you see as a holistic view, genomics, proteomics, and metabolomics. Now when we are talking about omics, what is the meaning of genomics? Where exactly it deals with? Proteomics, how it can handle, and metabolomics. So this artificial intelligence, it can combine genetic information from genomics, protein data, that is the drug targets, proteomics, and metabolic profiles to build a comprehensive picture of a potential instruction. So AI will try to combine, try to retrieve all the omics data, and then it can predict particular that interaction in a proper manner. So this is the role of genomics, proteomics, and metabolics in AI. Integration of these three omics for the AI prediction. Coming to the next part, that is AI for pharmacokinetics. Pharmacokinetics. What is the meaning of pharmacokinetics? What the body does to the drug, which involves ADME, correct? Adsorption, distribution, metabolism, and excretion. Now, pharmacokinetics, as I said, it describes how body processes a drug through that ADME and HDIs. Herb drug interaction normally occurs when herb interfere with this process. If even it interferes with any one of these process, it will lead to the herb drug interaction. So now the important thing for AI to predict the pharmacokinetics, PK of that herb as well as a drug. When we are talking about a pharmacokinetics, what body does to the drug. So that time, when drug goes inside a body, it will lead to the absorption, distribution, metabolism, and excretion. When we are talking about metabolism, it will take either in the liver, correct? So liver, which enzymes are generally involved in metabolism? That is a cytochrome P450 enzymes. It is supposed to be liver's heavy filters. And probably the problem with those enzymes, it will lead to the herb drug interaction. Now, this cytochrome P450 enzymes, which are primarily in the liver, it will help in a metabolism of those drugs. Many HDIs occur when herbal compounds either induce or inhibit these crucial enzymes, which will ultimately lead to the alteration of drug levels in the body. How? When I say that is St. John's wort, that is Hypericum purpuretum, it is one of the most common example in case of a herb drug interaction. How? Best example, St. John's wort. It contains hyperine, hyperforin, and flavonoids. These are the content. Now, specifically that hyperforin, what it does, after initial administration,
it inhibits those cytochrome P450 enzymes. At initial administration, this drug inhibit, the St. John's wort, it will inhibit cytochrome P450 enzymes. So automatically it will hamper the metabolism and the drug will be remain as it is, and there are the chances of a drug exposure. It will lead to the toxicity. But when chronic use, it will induce cytochrome 450 as well as a P-glycoprotein. P-glycoprotein, they are considered as a drug transporter proteins. What they will do, when it will induction of these specifically enzymes, it will enhance the metabolism and obviously therapeutic efficacy of drug will get lower. Drug will get fail. And that is the most common example of a St. John's wort. So increase, even when this drug specifically given along with the antidepressant, it will increase the serotonin levels, and this syndrome is called as a serotonin syndrome. These are the problems of a St. John's wort. CIP inhibition as well as induction prediction. Now when we know that is in case of a pharmacokinetics, these enzymes are involved. Now how AI can help in predicting metabolite differences. It will try to identify whether that herb, it will try to induce or inhibit CYP enzymes. Whether it will increase the level of CYP enzymes or it will inhibit the same. They can predict if a novel herbal compounds is likely to affect specific CYP enzymes and flagging potential interactions. Transporter protein interaction. As I mentioned, if you see here, drug molecules, herbal molecules and transporter proteins are there, which are nothing but gatekeepers of those cells, which helps in a transporting of a drug across the membranes. These drug transporter proteins like P-glycoprotein, they move drug in and out of the cells. Entry and exit of that drug from that cell, it will be governed by those P-glycoprotein. And in previous slide, which I have shown you, that is St. John's wort. Either initial stage, what it will do, it will just inhibit that CYP enzymes. But on chronic use, it will induce CYP enzymes as well as this P-glycoprotein, and it will lead to the drug failure. Herb can inhibit or induce these transporters, changing either drug absorption or distribution. Now, how AI can help in case of the prediction of those transporter interactions, forecasting cellular entry and exit? AI models are being developed to predict if herbal compounds will interact with the key drug transporters like P-glycoprotein, helping us anticipating changes in a drug viability as well as cellular exposure. Absorption prediction from gut to bloodstream, how AI can help for oral viability. If you see, when drug is taken alone, 90% absorption rate is there, but when it is taken along with the herb, probably because of herb drug interaction, absorption rate, it almost reduced half, up to 45%. AI can predict how well herbal compounds will be absorbed from the gut. It will be decided, it will be predicted by those AI tools. And this impacts the overall viability of a co-administered drug. Viability of a co-administered drug. When you are taking a particular drug with the herbs, it will be affecting the viability of the drugs which you are taking along with the herbs. Distribution and protein binding. When drugs go inside, distribution and plasma binding. Herbs can compete with the drugs for binding site on a plasma proteins. As I mentioned, why there are the chances of herb drug interaction? Probably they must be sharing the same metabolic pathways. The drug, body will not identify whether it is allopathic drug or a herbal drug. It will consider it as a drug only. So obviously for them, the receptors will be the same and there will be the competition. So herbs can compete with the drugs for binding sites on a plasma proteins, and which will alters the amount of a free drug available to act.
And in this case, AI helps model these competitive binding events. Excretion pathways in the same way as we are discussing the ADME, the last part, that is excretion pathways, clearing the body of the renal biliary excretion. AI can also predict how herbal compounds might affect renal or biliary excretion, not only in case of liver enzymes, but also the renal or biliary excretion pathways, potentially leading to drug accumulation or a rapid clearance. Now coming for the pharmacodynamics, we have seen the pharmacokinetics. Now pharmacodynamics means what? What the drugs does to the body, that is nothing but drug action. It describes how drugs affect the body, typically by binding to receptors on enzyme. You can see here the AI interaction analysis, drug receptor affinity, which is a 80%, but because of the herb drug interaction, herbal modulation, it will be reduced by 30%. It may give the inhibitory one. HDI can occur when herbs directly alter these target effects. Receptor binding competition, same like pharmacokinetics, here also receptor binding competition will be there. Competing for a lock, receptor agonism or antagonism. Either it will act as an agonist or antagonist. Now here you can see a drug molecule, agonists are there, herbal agonist as well as herbal antagonists are there. How it will work? Some herbs which contain compounds that can bind to the same receptors as pharmaceutical drugs, either mimicking, either it will work as an agonist, it will give the agonism, or blocking their effects, that is the antagonistic effect. AI for receptor binding prediction, that is a virtual docking. This is the area where right now most of the researchers are working, predicting direct interferences. For example, any herbs or the repurposing of the drug, which we have seen in a COVID era. What they did, probably what are the chemical structures of that particular drug, or in case of a herb, specifically which different phytoconstants are there, what are their chemical structure, chemical properties, and they try to dock. Molecular docking simulations, simulated conditions, that drug, how it will act on those protein receptors, protein targets of particular that virus, and they tried to check whether drug can be effectively work on the same. That was nothing but in silico studies. AI powered molecular docking simulation can predict if a herbal compound is likely to bind specific drug target, helping to identify direct pharmacodynamic interactions. It may give either additive or synergistic effects, amplifying or combining beyond competition. You can see here synergistic effect or additive effect. When we say 1 plus 1 is equal to 11, that is a synergistic. Additive 1 plus 1 is equal to 2. So whether HDI aren't just about the antagonism, some herbs, it can have additive or even synergistic effect with the drugs, enhancing the efficacy as well as the toxicity. It is not only enhancing the therapeutic efficacy, but there are the chances that along with it, along with efficacy, toxicity will also increase. Now in this case, AI can predict this complex relationship, whether it will give the synergistic or the additive effect. Different coagulation pathways in case of thermodynamics and bleeding risk, thinning the blood, herb drugs and bleeding, specifically blood coagulation, it cascades and herb drug interaction. Many herbs like ginkgo and garlic, as initial slides I have shown you how the garlic, it shall not be taken with aspirin because it may interfere with the coagulation part. And you must have experienced whenever you are going for the blood donation, they are specifically asking you whether you have taken any aspirin before night, correct? Why?
because it may interfere with the coagulation part. When combined with anticoagulants, this significantly increases bleeding risk, and in this case, AI model can help in a prediction of the same. Cardiovascular effects, the best example which I told you about the licorice one, heart matters, that is cardiac rhythm and blood pressures. Some herbs influence heart rate as well as blood pressure, and in that case, AI can predict a combination with cardiac drugs could lead to dangerous arrhythmias or profound hypotensions. Central nervous system effects, drugs like St. John's wort, as I mentioned, it is increasing the serotonin levels, and so when it is taken along with the antidepressant, it will give you the serotonin syndrome. Herbs affecting neurotransmitters, the herbs which are interfering with the neurotransmitter levels, if the drugs which you are taking specifically acting on the CNS, it will leading to the excessive sedation as well as excitability, and it will alter your moods. So in this case, AI also can predict the model these neurochemical interactions. Electrolyte imbalance, maintaining balanced electrolyte as well as kidney function. Certain herbs can affect electrolyte levels and the potassium, and this is the best example, licorice. It lead to the hypokalemia. It will decrease the potassium level, and this is a critical when combined with a drug that also alter electrolytes, potentially leading to the cardiac issues. And that's why I said licorice shall be avoided in licorice and aconite. Aconite is another drug, that is Aconitum heterophyllum ativish. Now what are the different AI models and what are the approaches for the herb drug interactions? Machine learning algorithms, it works in two different ways, supervised learning as unsupervised learning. I will not go in detail, just for your information, just try to understand these two terms. Supervised learning, that is a random forest or support vector machines. It is used to predict specific interaction based on the label data. Label data means the information which is already known. Whereas in case of unsupervised learning, that is unannotated data, that is the information is not available. It helps discover hidden patterns in a unavailable data, unreported data. Deep learning and neural networks. Deep neural networks, these are the AI approaches or the models. It excels at learning hierarchical features from complex data like chemical structure or omics data, omics like the proteomics, genomics, metabolomics, chemical structure and omics data, making them ideal for modeling intricate herb drug interaction. These are the models of AI. Whenever you will be putting the word in Google, that is what are the different AI models for herb drug interaction, then these three models, they will be there, immediately they will appear. This is a network pharmacology approach. AI powered network pharmacology, it views drugs and herbs as modulators of a complex biological networks rather than a single targets. Here in network pharmacology, particularly that drug, it will not consider only one target. What are the probable targets and how they will be correlated rather than a single targets, allowing for a more holistic prediction of interaction. Probably you might be not aware about the thing, but Dr. Bhushan Patwardhan is a person, he is from Pune University only. He worked enormously on the network pharmacology. In fact, 2004, he is the one who started network pharmacology work in India. AI models, that is graph neural networks. That's graph neural networks, it processes chemical structures. These are particularly powerful for chemical data, treating molecules as a graph of atoms and bonds. They can learn
substrate structures features that contribute to interaction potentials. The last part, that is explainable AI for a HDI interaction. You can say XAI. Now what is XAI? For clinical adoption, we need to understand why an AI predict an HDI. And these XAI techniques help to interpret those model decisions, increasing trust and providing mechanistic insights for the herb drug interactions. Data augmentation and synthetic data. Given the scarcity of an explicit HDI data, all techniques like data augmentation or generating synthetic interaction which can help to train more robust models. Clinical implementation and future direction. Now how AI can help, as we have seen just in a brief, which are the different models and how AI can help in predicting that herb drug interaction. What is a clinical, now what is the need of our right now? AI powered HDI prediction tools can be integrated into electronic health records and CDCS, alerting clinicians to potential interaction in real time drug prescribing. Now until and unless that clinician is not aware about the herb drug interaction, it's not necessary for every clinician, he will never read the literature until and unless he will come across. So if suppose such kind of database, which is, that system is developed, where automatically while prescribing, when the true drugs, where there are the chances of a herb drug interactions are there, at the time of prescription only, he will come to know there are the chances of those herb drug interaction. Already it is reported or a prediction is there, then he can avoid the same one. So in that way, it can integrated into electronic health records. No doubt, in India right now it is not possible, but out of India, most of the countries, they are continued with such kind of records. Even their prescription is also computer generated and automatically it will help to predict those herb drug interactions. Personalized HDI prediction. Beyond general warnings, AI can factor in patients' genetic comorbidities and current medicine to provide truly personalized HDI risk assessment. Personalized or the precision medicines, when the patient history is available in the record, in that case probably what kind of drug, even in case of the same symptoms which is shown by the other patient, but because of the comorbidities or the genetic structure, how that herbs which may work in case of other patient, it is not possible it will work in the here and it may lead to some herb drug interaction. It can be assessed in the form of those personalized HDI predictions. What are the regulatory challenges and the opportunities for the same? Regulatory bodies which are actively exploring how to validate and approve AI tools, they are not approved it fully. Some of the tools are there, but validate and approve AI tools for clinical use, especially for critical applications like a drug safety. And this is ongoing dialogue. Right now it's in process. Along with this, the education and awareness is equally important in case of the use of AI in case of herb drug predictions. Clinicians need to be aware of the importance of asking about herbal uses. Clinicians, those physicians need to ask the patient whether they are already taking some kind of herbs or the herbal medicines while prescribing with the allopathic medicines, and also ask them to avoid the self-medications. Ethical consideration, when we are using the AI, the most prominent risk is whether it will be safe, whether it will be in safe hand or what exactly, because you are giving everything to the technology. So the safety is a major issue. In that case, we must address ethical concerns, ensuring AI models are unbiased, protecting patient data privacy, and establishing clear accountability for AI-driven safety recommendations. And the key principles in that one: transparency and explainability, fairness and bliss mitigation, and robustness and reliability.
the future of HDI research. Now, where HDI research can go, what is the need or the collaborative innovation that is bridging disciplines, pharmaceutical, pharmacology, biology, computer science, clinical medicine. The future lies in a collaboration between pharmacologists, toxicologists, data scientists, clinicians, and regulatory experts to build, validate, and deploy these AI tools effectively. So that is a collaborative initiation is required, and for that key to success are diverse problem solving as well as a accelerated discovery. And the last one, that is a vision, a safe healthcare ecosystem where AI can be used as a proactive shield. Our ultimate vision is a healthcare system where AI acting as a proactive shield, automatically identifying and alerting to potential herb-drug interaction, ensuring safer and more effective treatment for every patient. So the conclusion and call to action, I will say, from uncertainty to insight, embracing the AI for HD identification, how it is not just AI, it is not just a tool, it's a paradigm, it's a movement shift for HDI identification. It moves us from reactive risk management to proactive patient safety. And so let's embrace this technology to make healthcare safer for all. Thank you. I know this is one of the least explored area. Whatever the data I can collect on the specific topic, I try to touch upon the different aspects of different tools of herb-drug interaction. What is the meaning of herb-drug interaction and how AI can help in the same way. I hope you understood some part. I won't say all you understood, everything you understood, but at least you are touched upon what are the different databases and the tools. Thank you so much, sir. May I request you to please take your seat. Now, the platform is open for the question and answer session. If anyone is having any question, they may ask. Yes. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. First of all, thank you so much, sir, for this Hello. informative session. Sir, my question is, how can we identify or study the HDI in polyherbal formulations? Because more than one herbs are involved in that. So how we can detect it? I didn't get your question. What? How we can detect the HDIs, herb-drug interaction, when we use the polyherbal formulations? That is the problem, no? As I mentioned. Yeah, it's a good question, no doubt. In fact, one of the slides I showed you, what are the challenges in identifying the herb-drug interaction? The problem is, it is a multi-component one. As of now, the very few drugs are there. Or in case of a polyherbal drug, specifically, the chemoinformatics or all chemical properties, or you can say all the information about that drug, it must be available. And based on that only, we can try to see whether it can interfere with the metabolic pathway of other drug. In case of a polyherbal drugs, now we know, or especially those interference of metabolic pathways in case of allopathic drugs are reported, but in case of herbs and herbs, right now different tools are there, they are checking, specifically in case of in silico or the network pharmacology approach, it will help in that way. Now I don't know whether you are the graduate student or a PG student. Sir, I am a graduate. Graduate student, okay. You just try to get information about the network pharmacology and all the things. So how one drug is acting on a different targets, and so whether there are any chances are there. So you will get that idea. Okay, thank you so much. Yeah. Sir, as an academics, my question is that
we in a current scenario we talk about the AI, but no any guidelines in UGC or any PCI or any MSPC or any MSBT or any university appointed the officials for that, because we are lack of technology. So how can we mitigate that problem with a collaboration with that experts? So how can, as an academician, we can overcome that problems, because pharmacists are lack of technical knowledge. So no any guidelines in our NEP also, there is no any guidelines for appointed official any AI related experts in the education. That's Your good name, please? Dr. Lokesh Berde from SSBT College of Pharmacy, Jalgaon. From Jalgaon. I think you must have gone through the new syllabus. Okay. Some of the portion they try to cover. They try to include the artificial intelligence and everything right now. So I think it is a policymaker's decision to which part they need to include, what to cover. As a researcher, I would say we are having the only options how we can use these AI tools for the research purpose only. I am no authority to talk about those policy making decisions. I am sorry, brother. Your question is right, correct. No one is experts or no one is talking about, only everyone is saying we need to use the AI, but what are the practical approaches, how to use them and all the things? It is quite difficult. Very frank to say, even most of the BOS, though I am the BOS chairperson of the Goa University, when we are discussing about these topics, there is a big question mark in front of us. Even how many faculties from us only, they are interested to learn these new techniques now? Very few. So we don't know how to cope up with this technology now, specifically AI or the new NEP. Sir, hello, sir. Here. Sir, in your slide, AI for data acquisition processing, you have mentioned various databases, and you have mentioned also the ethnological study of HDI is studied by these databases. So how the HDI of how the HDI is monitored by databases in ethnological studies, sir? बड़ा मला तुझा क्वेश्चन नाही समजला. सर AI डेटाबेस अँड ॲक्विजिशन प्रोसेसिंगमध्ये तुम्ही वेरियस जे डेटाबेसेस वापरले जातात HDI मॉनिटरिंगसाठी, वेगवेगळ्या किमोटॅक्झॉनॉमिकल स्टडीज, इथेनॉलॉजिकल स्टडीज, मग त्यामध्ये सर इथेनॉलॉजिकल स्टडीजमध्ये HDI मॉनिटर कसं करतात डेटाबेस वापरून? नाही, तोच तर प्रॉब्लेम आहे सध्या. आणि इथनॉलॉजिकल आणि तू जो म्हणतोय हार्ट ड्रग इंट्रॅक्शन, दे आर कम्प्लिटली डिफरंट टर्म्स. इथनॉलॉजिकल व्हॅलिडेशन, व्हॉट डज दॅट मीन? Human study, ethnological. Okay. You are interpreting in that way. No, I will say in different way. Now, whatever you are talking about those databases, you are the PG student or UG student? PG student. PG student. In M-Pharm chemistry. M-Pharm chemistry. Have you come across these tools like in silico studies and all the things? By PubChem I have used, but not other databases. You just try to go through the databases and you will get the information. As I mentioned, chemoinformatics. Okay, that is the most important thing, yes, which will discuss everything. That is chemical properties and the structure and how it will behave inside the body, how it will behave in that biological system. And based on that, it can be interpreted. Now the thing is, very few heart drug interactions are reported. Now it is not possible. As I mentioned, it is not easy, or it is supposed to be a Herculean task to identify heart drug interactions. So what they are doing, based on that chemoinformatics, the drug which has already shown that heart drug interaction, the similar chemical structure, similar chemical properties, the drug of the same chemical structure or chemical properties, probably they are the chances they will give the same type of heart drug interaction. So are the interactions because of chemical point of view, sir? Chemical nature? It is not only the one factor. Different factors are there. Okay. Different factor. And that is the reason, no? There is a difference when you are, some results if you are getting by in vitro methods up to potential level, but they are failing when we are going for the in vivo studies. Okay, yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for answering all the questions very briefly. May I request you now to please take your seat? Thank you, sir. I, Pratiksha Kare, it gives the immense pleasure to propose the vote of thanks for today's enlightening session
On behalf of Pravara Rural College of Pharmacy, Loni, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Shailendra Gurav sir for delivering such an insightful and thoughtful provoking session on harness artificial intelligence to identify herb-drug interaction. We are extremely thankful to Dr. Shailendra Gurav sir for sharing his valuable knowledge and expertise with us today. Sir's session beautifully highlighted how the artificial intelligence can play a crucial role in predicting, analyzing and minimizing the herbal drug interaction, which is specifically important in the field of herbal medicines. It also sir has also highlighted many of the points like how was the first condition of the patient if the herb drug interaction was occur, what are the challenges in highlighting the herbal drug interactions. The way sir connects the AI concepts with the real world pharmaceuticals and the clinical relevance made the topic both interacting and the understanding. Thank you sir for this. We truly appreciate sir's effort in simplifying such an advanced and emerging area and inspiring us to think innovatively to the safe and the herbal use of the herbal medicines in the modern healthcare. This session has definitely broadened our perspective and motivated us to explore the interdisciplinary research involving the AI and the pharmacognosy. Thank you, sir, for this. Thank you, Pratiksha. So for further proceedings, I would like to request our next speaker, Dr. Abhay Jay Prakash Gandhi, sir, and Dr. Jalpa Gandhi, ma'am, to grace the stage and have their seat. I also request Principal Dr. Manga Theyaru ma'am to please join them. So, ladies and gentlemen, with a huge round of applause, let us welcome our next speaker, Dr. Abhay Jay Prakash Gandhi, sir, Director, ERA Consultancy and Research Organization, Pune. So, before starting the session, let us take the honor to do the felicitation. So, to do the felicitation, I request Dr. Manga Theyaru ma'am to please felicitate, sir. Also, we have with us Mrs. Dr. Jalpa Gandhi ma'am, Director, ERA Consultancy, Pune. On behalf of Pravara fraternity, welcome you, sir. We are also privileged to have with us Dr. Jalpa Gandhi ma'am, Director, ERA Consultancy. I request Dr. Sulena Vikhe ma'am and Dr. Manga Theyaru ma'am to felicitate ma'am. So once again, on behalf of Pravara fraternity, we welcome you. Without wasting much of the time, I would like to request Ms. Nikita Tambe, and pharmacy student, to introduce sir. Good morning, everyone. It's my privilege and honor to introduce our esteemed speaker for this session, Dr. Abhay Jay Prakash Gandhi, who will be delivering today's session on AI in natural product. Dr. Abhay Jay Prakash Gandhi is an accomplished researcher, academician, and scientific entrepreneur with multidisciplinary expertise in Ayurveda, pharmaceutical science, and cancer biology. Sir has completed his PhD from prestigious Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar, and Institute of National Importance, Government of India.
Sir has published more than 45 research articles, authored 3 books, and has been granted 6 patents in India and UK. Sir has worked as scientist at National Institute of Ayurveda and completed his postdoctoral fellowship in cancer biology from Bharatiya University, Coimbatore. Currently, he serves as the director of ICRO, where he leads innovative research, consultancy, and clinical development program bridging traditional medicine with modern biomedical science. With his vast experience and visionary work integrating traditional knowledge with modern science, we are truly fortunate to have him with us today. Sir, we have honored to have you with us. I now request you to kindly begin your session. Thank you. Hello, hello, hello. Hello. Okay. Respected Vikhe Patil Sahib, respected Principal Ma'am, respected Bhawar Sir, Someshwar Sir, Sunanya Ma'am, and all staff and all members. I am Dr. Abhay Jaiprakash Gandhi. I will give you my short introduction. I have completed my Masters in Ayurveda. After that, I have completed my PhD in Pharmaceutical Chemistry. After that, I work in the government, National Institute of Ayurveda, Jaipur. After that, I have completed my postdoctorate, you can say postdoc, in cancer biology. After that, I am now working as a director at IRA Consultancy and Research Organization. So, today's topic is from plants to patient, AI tool in natural product research. Like I know previous lecture is completed. If you want to go outside, I will wait for 5 minutes. If you want to go, I will wait for 5 minutes. We can continue? We'll wait for 1 minute. After that, if anyone want to go, you can go. After that, we can start. Okay, let's start with the introduction. The people come, we'll start with the actual topic. How many are BPharm scholar here? BPharm, how many students? Please keep your hand like this. Okay, nice. How many are MPharm student? Okay, and how many are PhD and faculties kind of? Okay. So, मराठी मध्ये येतो, हिंदी मध्ये येतो, हिंदी में आ रहा हूँ. If anyone want, like language barrier मत रखना at any cost. अगर कोई question है, immediately पूछना. इंडस्ट्री का बंदा हूँ, इंडस्ट्री के हिसाब से टूल्स सिखाने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं रिसर्च. बीफार्म एनीवन, व्हाट इज रिसर्च? एनीवन? रिसर्च क्या होता है? यस? एनीवन? यू कैन रीड हियर. यस? हाँ. यू कैन से व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च करना है ना? सो व्हाट इज रिसर्च? यू कैन रीड हियर, नो इश्यू. डरो मत, बिंदा यहाँ पे खुल के करना है. जो भी है, जो आंसर देने बिंदास बताओ. सॉरी, नॉलेज. गुड. अ सर्च फॉर नॉलेज. रिसर्च का सेकंड मीनिंग होता है रिसर्च. जो फिर से रिसर्च करते हैं उसको रिसर्च भी बोलते हैं. अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. चलो एक चीज थोड़ा बैक लेता हूं. तुम्हें आज क्या सिखाने वाला वो अच्छे से पहले बता देता हूं. रिसर्च क्या होता है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिसर्च प्रोसेस क्या क्या है? तीसरा, आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू डॉक्टर शैलेंद्र सर. मैं एक्चुअली 2 पीपीटी लेके आया था. पहली पीपीटी मैंने कैंसिल कर दी, दूसरी पीपीटी में लगा रहा हूं.
पहले पीपीटी सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है. सेकंड पीपीटी में ये था कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच समझाना है. कौन से एआई टूल है, टूल के नाम बताने वाला हूँ. जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, वैसे सारे टूल्स, मोर देन 50 टूल्स है. सो एआई टूल इन रिसर्च जनरल कैटेगरी कौन से टूल है. मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का बंदा हूँ, इंडस्ट्री के हिसाब से बताऊंगा कौन से टूल यूज होने वाले हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, एआई टूल इन रिसर्च जनरल कैटेगरी, एआई टूल्स यूज इन एडवांस स्क्रीनिंग एंड ड्रग डिस्कवरी. यूजुअली इंडस्ट्री का बंदा हो तो जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे चालू होता है. अगेन सर का जहाँ पे 2-3 सवाल पूछे गए वहाँ से मैं चालू करने वाला हूँ रिगार्डिंग एआई टूल. AI tool in advanced screening and drug discovery, AI tool used in specialized Ayurveda and natural product database, AI tool used in metabolomics and structure elucidation, AI tool used in genome mining and biosynthesis, AI tool used in advanced molecular design and simulation, AI tool used in identification and quality control, AI tool used in knowledge synthesis and simulation, और लास्ट में AI tool for removing AI content. एमफार्म के स्कॉलर एआई कंटेंट कौन कौन कॉपी कर रहा है? एआई में से कॉपी तो करते होगे सब लोग, असाइनमेंट वगैरह. अच्छा चलो थोड़ा सा और मतलब जुल मिलने की कोशिश करता हूँ. एडवर्टाइज देखते हो टीवी पे, म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइज पता है? उसका कोई मुझे माइक दोगे किसी को? उसका मुझे डिस्क्लेमर जो आता है लास्ट में वो मुझे सुनना है किसी के पास से. डिस्क्लेमर आता है लास्ट में, आता है या नहीं आता है? जोर से हाँ या ना. वेरी गुड. अभी एक जन कोई भी बताओ डिस्क्लेमर क्या, तुम्हें मजा आएगा. यस दैट गाय. वेरी गुड. फर्स्ट अप्रिशिएट दैट गाय प्लीज. हेलो. ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. यस एग्जैक्टली. वैसे ही एआई का भी डिस्क्लेमर है. अगर आप कोई भी चीज एआई से लेते हो, पढ़े बिना आगे कभी मत भेजना. एआई कैन गिव फॉल्स आंसर. ये मैं 100% तुम्हें बोल रहा हूं. अगर आयुर्वेदा में कोई है, अगर लग रहा होगा कि एआई में डाल दिया, वो श्लोक भी फॉल्स बनाता है. सो ये सबसे पहला डिस्क्लेमर है कि एआई कैन गिव फॉल्स आंसर्स. नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो सही आंसर देगा. ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, जो मैं बेसिकली पैसे कमाता हूं, वो चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हम कैसे काम करते. मेरे पैसे जाने वाले, मैं फिर भी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं. सो रिसर्च ये हुआ. रिसर्च प्रोसेस सबको पता है. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, पता है किसी को? वेरी गुड. नल एंड अल्टरनेट. वेरी गुड. देन डिजाइन रिसर्च करते, डेटा कलेक्शन, देन आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फाइनल रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन. ये था मेरा जनरल इंट्रोडक्शन. अभी इसके आगे फ्रॉम अ लीफ इन द फॉरेस्ट टू अ मॉलिक्यूल मेडिसिन यूज इन द क्लिनिक, आज हम ये पढ़ने वाले हैं. तो उसके लिए नीचे मैंने एक लाइन लिखी आपके लिए, प्लीज स्विच ऑफ और switch off your mobile phone. In return, I will ensure that the next 1 hour proves to be your valuable, worthy and enriching experience for you. अगर कोई मोबाइल, अगर किसी को जाना भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो, बट अगला 1 घंटा आपके लिए मैं पूरा वर्दी बनाऊंगा और आगे जाके पूरे लाइफ में तुम्हें ये सब चीजें काम आने वाली है. 2 मिनट रुको, मैं किसी को जाना है बाहर? नहीं पक्का? तो 1 घंटा जाना है, अगर जाना है तो जा सकते हो, इशू नहीं है. और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें मजा आएगा एआई टूल पढ़ने में. एआई टूल यूज इन द रिसर्च. कौन से एआई टूल तुम्हें पता है? मुझे लगता है चैट जीपीटी और जेमिनी. इसके अलावा रिसर्च के लिए पता है कोई? कौन सा? उसमें आंसर मिलते हैं अच्छे से? मिलते हैं. गुड. इसमें से कितने पता है? चलो ये पढ़ के बताता हूं. ये सबसे आगे, ये जनरल कैटेगरी में अभी भी बोल रहा हूं. ये कौन से टूल है? जनरल कैटेगरी. वो लड़की ने सवाल पूछा था कि कैसे करना है. ये एआई टूल यूज होंगे. कौन से? लिट मैप, कॉन्सेंसस, साइज स्पेस, नोटबुक एलएलएम, जेमिनी, चैट जीपीटी, जूलियस एआई, पेपरपाल, डायमेंशन एआई, इरिस एआई, एंड नोट, रिसर्च गेट, क्विलबोट, स्कॉलर एआई,
reference and write, Grammarly, Zotero, Deep AI, Meta is AI tool, AI research assistant, data robot. पढ़ना है डिटेल में या आगे फॉरवर्ड करूं? पढ़ना है डिटेल पक्का? चलो गुड. अभी लिट मैप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसर्च में क्या आता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर. उसके बिना काम चालू नहीं होता है. लिटरेचर मैपिंग एंड गैप आइडेंटिफिकेशन. यूसेज क्या है लिट मैप का? लिट मैप यूजेस AI टू हेल्प रिसर्चर विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, आइडेंटिफाई गैप एंड जनरेट न्यू रिसर्च क्वेश्चन. उसका एप्लीकेशन क्या है? सिंपल वर्ड में मास्टर्स वालों के लिए बता दूं, अगर कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो तो उसका मैपिंग करना है, कौन से आर्टिकल है उसमें से डेटा निकालना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा लिट मैप. ठीक है. अगेन डिस्क्लेमर याद रखना, AI कैन गिव फॉल्स आंसर. सो जब भी कोई चीज ये करो, कॉपी करो, पढ़ना, पढ़े बिना डायरेक्ट फैकल्टी को ये मत करना. फैकल्टी को पढ़ने को अच्छे से आता है और पता भी होता है तुमने कहां से लिया हुआ है. बी अ स्मार्ट वन, नॉट अ डम वन. ओके. कॉन्सेंसस, एविडेंस बेस्ड रिसर्च आंसरिंग. अभी उसका यूसेज क्या है? यूसेज AI टू एग्रीवेट एंड सिंथेसाइज एविडेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसर्च टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. अगर पहले का कोई काम हो चुका है और नया क्वेश्चन है तो उसका आंसर कौन देगा? कॉन्सेंसस. तीसरा है साइस्पेस, अंडरस्टैंडिंग रिसर्च पेपर थ्रू AI. साइस्पेस क्या करेगा? साइस्पेस uses AI to enhance the reading experience, helping researcher understand paper by summarizing key point, explaining complex terms and providing insights. लोगों को लग रहा होगा कि चैट जीपीटी और जेमिनी तो हमारा काम पूरा हुआ. एक चीज याद रखना, हर एक का अपना अपना रोल है. थोड़ा फिर अगेन तुम्हें इंटरेस्टिंग करता हूं, मेरा खुद का AI टूल है आयुर्वेद AI. इंडिया में सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च किया है आयुर्वेद AI का टूल. तो मैं तुम्हें डिटेल में, अगर उसमें NLP बोलो, LLM बोलो, हर चीज भी डिटेल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मैं डिटेल में भी बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है. अगर किसी को कोई सवाल है यू कैन आस्क डायरेक्टली, बिंदास. कोई डोंट मेक एनी लैंग्वेज बैरियर हियर. कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, बकवास से बकवास क्वेश्चन हो, अच्छे से अच्छा हो, यू कैन आस्क. दिल में मत रखना. यहाँ से जाके जो 1 घंटा है वो वर्दी करके जाना, फालतू यहाँ पे बैठे नहीं है. देन नोटबुक LLM, AI driven summarization and note organization. Organization note automate summarization of key concept from research paper and provide structure summaries for quick reference. Summary भी देता है, chat GPT भी देता है, but ये अच्छे से देता है notebook LLM. जो उसका एप्लीकेशन क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा, फॉर एग्जांपल PhD कोई कर रहा है, आपके पास 100 रिसर्च आर्टिकल है, उसमें से समराइज करना है पर्टिकुलर आर्टिकल लेके. सो आप ये देख सकते हो, जनरेटिंग समरीज ऑफ रिसर्च आर्टिकल और बुक, ऑर्गेनाइजिंग नोट्स इनटू कंसाइज इजीली नेविगेबल फॉर्मेट. इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा. जेमिनी गूगल ने जो बनाया है वो है. दूसरा चैट जीपीटी ओपन AI, सबको पता ही है. जूलियस AI बेस्ड डेटा असिस्टेंस एंड इंटरप्रिटेशन सपोर्ट. अभी कोई केमिस्ट्री का बंदा उठा था, कौन था वो? केमिस्ट्री में अगर IR का अगर ग्राफ दे, इंटरप्रेट कर पाओगे? हाँ, नहीं कर पाओगे. मैं लिख के देता हूं, पूरा नहीं, मैं लिख के देता हूं. नहीं पूरा, उसमें पूरा आधा रहता ही नहीं. होता है तो पूरा होता है, नहीं तो आधा होता है. बट अभी बहुत जगह पे हेल्प हो रही है यहाँ पे भी. सो याद रखना, अगर ये भी हो, लेकिन थेरोटिकल कंसेप्ट जो डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर कोई चीज आएगी तो ये आएगी. ठीक है. Julius AI based data assistance and interpretation support, help researcher analyze and interpret large data set, offering insight and data visualization. Application क्या क्या है? Assisting with statistical analysis, model prediction, then providing data driven insight that guide the research process. जो मैंने बताया, अगर कोई इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं डिटेल में और भी जाने वाला हूँ. नेचुरल वाले भी अलग अलग है, ये जनरल कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ. हर एक का यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए कोई ना कोई टूल आने ही वाला है. पेपरपाल AI एडिटिंग फॉर एकेडमिक राइटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट क्वालिटी. मैन्युस्क्रिप्ट क्वालिटी की बात आई है, और आर्टिकल अगर अच्छे से लिखना है, ये मैं इंडस्ट्री का पैटर्न बता रहा हूँ. सीखना है कैसे आर्टिकल राइटिंग 2 घंटे में एटलीस्ट मतलब मैनर बने, सीखना है. व्हाइट बोर्ड मिल सकता है? जब तक आ रहा है मैं तब तक आगे पढ़ता हूँ, बाद में वी कैन कंटिन्यू विथ अगेन रिसर्च राइटिंग. अगर किसी को भी करना है, मैं सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो चीजें आप कर लेना, आपका होगा. डायमेंशन ये है. यहाँ पे न्यूज कितने लोग पढ़ते हैं?
पढ़ते हो? अरे हाथ ऊपर करो. रिसर्च रिलेटेड न्यूज कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हो? अभी एक चीज हुई थी 2 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबसाइट बैन की थी. वो कौन सी की थी पता है? कोई फैकल्टी मेंबर या कोई जहां पे ये पता है? एक वेबसाइट बंद की है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी हम जैसे लोगों के लिए. साहब, वेरी गुड. साहब नाम की वेबसाइट, पता है किसी को क्या है साहब? क्या है बोलो? कोई माइक दो. किसी को पता है? यस, दैट गाय. कौन से रिसर्च पेपर? हाँ, एक मिनट, माइक गया. पेड पेपर. गुड. पेड पेपर मतलब जो बैचलर हो गए उनको शायद पता नहीं होगा. अगर हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या नॉर्मल सर्च करते हैं, कुछ पेपर पे लिख के आता है एक तो एक्सेस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और यू कैन पेड हियर. सो वो लिंक लेके हम साहब में जाके डालते थे तो वो पेपर तुम्हें फ्री में मिलता था. अब वो चीज बंद हुई है, लेकिन ऐसा मत समझो बंद हुई है, उसके भी तरीके हैं. But they don't know, ma'am, how, like I am teaching here more than 50 AI tools which will be used for their academic profile. So dimension है, अगर उसमें लॉगिन करो, आपका पेपर डालो. बट अभी नॉर्मली भी आप साहब अगर VPN पता है किसी को? कोई माइक लेके मुझे ना सबको आंसर पता होने चाहिए. अगर एक बोलता है तो भी सबको आंसर पता होना चाहिए. कोई एक लड़कों में से पता ही होगा, दैट गाय पता है? कोई एक VPN क्या होता है बताओ? VPN मीन्स त्याच्यात असं आपलं लोकेशन चेंज दाखवतं, IP ॲड्रेस पण कुठून कुठला? कोणत्या दुसऱ्या कंट्रीचं पण दाखवू शकतो. एग्जैक्टली, दूसरे कंट्रीचा हा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट है. अलग कंट्री का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में साहब बैन हुआ है, अमेरिका में तो नहीं हुआ. So what we can do, we can change VPN from Indian to America or any other country. So we can access their profile. बट अगेन उसमें प्रॉब्लम क्या है? वहां पे 2021 तक के आर्टिकल मिलते हैं. कितने तक मिलते हैं? 2021. उसके बाद जर्नल वालों ने भी नया सिस्टम निकाला है. सो अगेन जर्नल से बात आई है तो ये भी तुम्हें बताता हूँ, मेरे खुद के 10 इंटरनेशनल जर्नल्स है तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें डिटेल में बता सकता हूँ. सो मैं तुम्हारा लेक्चर थोड़ा अच्छे से तुम्हें आइडिया है, मजा है, इस हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीजें रिवील करके. डायमेंशन है जो मैंने बताया कि बियॉन्ड साहब, अगर साहब पे नहीं मिला तो नॉर्मली डायमेंशन एआई पे जाओ, आपका आर्टिकल का टाइटल सर्च करो, मिल जाएगा. सेकंड पॉइंट, फॅकल्टी के लिए एक चीज बता रहा हूँ. बहुत बार ऐसे होता है की सर आपण स्कोपसला जाऊन ऑथर प्रोफाईल मध्ये नाव टाकतो. नाव टाकल्यावर फक्त पहिले काही आर्टिकल शोन होतात किंवा एखाद्या ऑथरचं एकच आर्टिकल शोन होतं. जर तुम्हाला तुमचे आर्टिकल स्कोपसमध्ये किती आहे विदाउट स्कोपस प्रोफाईल ज्याच्यासाठी तुम्ही पेड करता त्यांना पाहायचं असेल तर डायमेंशन एआय इज द टूल. In that what we can do, we can search author profile. Like if you have published more than 50 research article in Scopus, but if you go normally, you have to pay for that to see that list. So like for alteration, we have Dimension AI tool. The next one is Iris AI, AI powered literature search and discovery. Iris AI uses natural language processing to understand the content of scientific paper and find relevant literature based on research need. Application: facilitating the literature review process by suggesting relevant paper. अभी बहुत बार ये होता है कि प्रोफेसर ने बोल दिया ये पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, मुझे तो पता ही नहीं. अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इन सिलिको के बारे में पेपर चाहिए इन अश्वगंधा, आप कौन से वेबसाइट पे सर्च करोगे? पबमेड और गूगल स्कॉलर. वेरी गुड. देन हाँ, रिसर्च गेट अगेन, हाँ, सायन्स डायरेक्ट, वेब ऑफ सायन्स. अजून आता त्याच्यात पण तुम्हाला मजा सांगू, उसमें भी तुम्हें नई चीज बताता हूँ. वो भी सर्च गूगल स्कॉलर पे करोगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ही आर्टिकल आने वाले हैं. तुम लोग 1 नंबर पेज 2 नंबर पेज मैक्सिमम 2.5 पेज तक जाने वाले हो, तुम 10 तक तो जाते नहीं हो. तो उसमें भी टोटल 15 वेबसाइट्स है. तो वो भी गूगल पे सर्च करना भाई, आफ्टर एक्सेप्ट ऑफ गूगल स्कॉलर विच वेबसाइट आर लाइक रिलीवेंट टू फाइंड द लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्च. उसकी जगह पे अगर कोई चीज करना है तो इरिस एआई भी कर सकते हो. अभी क्विलबोट
क्विलबोर्ड पता है किसी को क्या है? जिन्होंने यस बोला है ना, वो लोग फंसे हुए, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं अभी यहाँ पे। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ क्विलबोर्ड का। क्विलबोर्ड ने किसी ने क्या किया, मैंने किसी को बोला कि भाई प्लेगरिज्म आया है तो क्विलबोर्ड कर ले, पैराफ्रेज हो जाएगा। उसने भाई ने क्या किया, पूरा का पूरा थीसिस क्विलबोर्ड से मारा, उसने पेड वर्जन लिया, पूरा का पूरा थीसिस मार दिया, प्रोफेसर को दिखाया। अगेन जो मैंने डिस्क्लेमर एआई में दिया था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर क्विलबोर्ड में कुछ करते हो तो 90% ऑफ टाइम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखोगे, देयर इज नो यूज ऑफ दैट मटेरियल, जीरो यूज, जब तक आप आपका खुद का दिमाग नहीं लगाओ। भले ही आज मैम का जो टॉपिक है, फर्स्ट अप्रिशिएट मैम फॉर दिस टॉपिक एआई एंड नेचुरल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वो टॉपिक में डिस्क्लेमर है, ये तुम लोग मत भूलना, क्योंकि चेक करने के लिए मैम और सर ही है, ठीक है? तो क्विलबोर्ड में आधी चीजें फेक होती है, तो उसमें भी पढ़ना भाई मेरे सच में काम का है या नहीं है। अगर बोल दिया मेरे को करना है, खत्म हो गया मेरा काम, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्लेगरिज्म मतलब पता है ना सबको, बीफार्म क्या होता है? प्लेगरिज्म बीफार्म में से कोई? यस दैट गर्ल, अरे बिंदास बोलायचं काय? हाँ एमफार्म बोला, प्लेगर, हाँ ओके, साध्या भाषेमध्ये चोरी झाली, बरोबर? आता चोरी झाली आहे, चोरी क्लिअर करायची आहे, तर चोरी क्लिअर करताना पण आहे ना खूप डोकं लावावं लागतं। एक खोटं बोललं ना 100 खोटं कंटिन्युअस पळत जावे लागतात। सो एक तर करताना पहिले स्वतःहून डोकं लावून क्विलबोर्ड मधनं करा, त्याच्यानंतरच प्रोफेसर किंवा गाईडला दाखवा, ओके? So Quillboard is a writing assistant that uses AI to paraphrase, summarize and enhance content to improve clarity and coherence. Application: paraphrasing paragraph for better readability, summarizing long article into short actionable insight. भले त्यांनी लिहू द्या तिथे, पण माझं वाक्य लक्षात ठेवा, कारण इंडस्ट्रीचा माणूस आहे, ठीक आहे? इंडस्ट्रीचा माणूस आहे, तुम्हाला तो नक्की सांगेल काय चुकीचं आणि काय खरं आहे। त्यानंतर स्कॉलर एआय, गुगल स्कॉलर ऐकलं असेल, स्कॉलर एआय वेगळी गोष्ट आहे। स्कॉलर एआय इज नॉट अ गुगल स्कॉलर। स्कॉलर एआय काय? ऑटोमेटेड रिसर्च असिस्टंट। स्कॉलर एआय ऑफर ऑटोमेटेड इनसाइट, सजेस्टिंग पेपर, मेथोडॉलॉजी अँड ट्रेंड बेस्ड ऑन द रिसर्चचा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। एमफार्मसाठी इम्पॉर्टंट आहे। त्यानंतर ॲप्लिकेशन: आयडेंटिफाईंग इमर्जिंग रिसर्च ट्रेंड अँड गॅप, रिकमेंडिंग न्यू अप्रोचेस फॉर ऑनगोईंग रिसर्च। एमफार्मवाल्यांना एक जेन्युन सजेशन देऊ, जरी याचा जमाना असेल तरी वाचणं, रीडिंग नका सोडू। रीडिंग इज अ मस्ट थिंग। यू कैन रीड रिव्यू आर्टिकल। अगर साइंटिस्ट बनना है आपको, इफ यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, देन यू हैव टू रीड every time, like if you got any assignment, then directly go on ChatGPT and read. Don't do this. If you want to go further in your life, go yourself. AI आपको मदद करेगा। AI is a tool to help you, not to become scientist. अगर उसको साइंटिस्ट बनना तो खुद ही बनता ना भाई। हम AI को, बराबर है ना? आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है तो मेहनत करना है। मेहनत करने बिना कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री में आना, इंडस्ट्री में इंटरव्यू में आएगा तो AI में से नहीं होगा, ठीक है? सो पढ़ाई करना, रीडिंग इज अ मस्ट थिंग। स्कॉलर एआई हुआ। रेफरेंस एंड राइट, ये शायद पता हो आपको, एआई फॉर एकेडमिक राइटिंग एंड रेफरेंसिंग। रेफरेंस एंड राइट हेल्प इंप्रूव एकेडमिक राइटिंग, प्रोवाइडिंग सजेशन फॉर रिफरेंसिंग। रिफरेंसिंग जो क्विलबोर्ड में मैंने बताया, वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। एंड रेफरेंसिंग, अच्छा रेफरेंसिंग से याद आया, रेफरेंसिंग के स्टाइल पता है किसी को क्या होता है? एपीए और, हाँ यहाँ पे आंसर कौन अच्छा दे रहा है? तुम दे रहे हो क्या? बैठो आगे, अच्छे से लेक्चर देखो। सीट हियर भाई। 1 घंटा मिला है। मेरे प्रोफेसर ने एक बार बोला था मुझे, अगर 1 घंटा लेक्चर बंक करना है कहीं, वो 1 घंटा कहीं पे अच्छे से जा रहे हो, देन यू कैन, मतलब गो उधर जाओ और अच्छे से करो, 1 घंटा अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर वेस्ट करने वाले उधर ही, तो उससे अच्छा क्लास में आके बैठो। सो भाई दिख रहा है? अच्छे से पढ़ो, गुड आंसर। सो रेफरेंस एंड राइट help improve हुआ। application assisting with structuring academic paper such as research proposal and thesis document, providing grammar style correction based on academic standard। grammarly सबसे important tool है। अगर कोई क्विलबोर्ड का फसाड करता भी है तो उसके बाद ग्रामरली आ जाना, ठीक है? ग्रामरली आके क्या चेक करना है? ग्रामर बराबर है या नहीं, वो तुम्हें पूरी अपने हम कहाँ पे खड़े हैं वो भी बता देगा।
ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो चैट जीपीटी पे डालना, भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो इसको मुझे 10 में से रेटिंग दे। वो क्या करेगा, जो भी रेटिंग देगा उसके आगे वो बोलेगा भाई तो अगर ये चीजें ठीक करेगा तो तुम्हारा रिसर्च पेपर अच्छा होगा। ठीक है, ये सब चीजें कंटिन्यू में आने वाली है, तो ये छोड़ना मत एट एनी कॉस्ट। ग्रामरली तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल? बिंदास पूछो, लैंग्वेज बैरियर मत रखना, जो भी लैंग्वेज आती हो। मैम, क्विलबोट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर paraphrasing. In paraphrasing, what happened? They are changing the words without meaning. Without changing the meaning, they are giving the sentence. But if you read that sentence, you will find no use. So it will like normal, some 8-9 it just paraphrase, but it looks like some 5th-6th scholar is doing like the sentence. So that's why Quillbot is a problem. If anyone want to do Quillbot, after doing that, read that sentence. It is correct or not. If it is correct, then you can take your. And why Quillbot is also necessary? Again, the point is plagiarism, चोरी। सीधे भाषा में चोरी की सॉफ्टवेयर पता है कौन से पकड़ते हैं? उसका पुलिस कौन है चोरी का? टर्निटिन, वेरी गुड। और ड्रिल बिट, वेरी गुड। और अरे बताओ बिंदास। ऑथेंटिकेट पता है किसी को? हाँ, उर्कुन अभी ड्रिल बिट चेंज हो गया, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर। सो ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर में तुम अगर ऐसा लगता होगा कि एआई कंटेंट डाला तो क्या पकड़ा जाएगा, अगेन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे नॉर्मल प्लेगरिज्म था उस वैसा जो चोरी थी अभी एआई की भी चोरी पकड़ी जाती है। सो ये थिंक मत करना, हमारे सब फैकल्टी के पास सॉफ्टवेयर है एआई प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल के भी। सो अगेन वही, अगर बड़ा होना है जिंदगी में, एआई का यूज करना है एज अ ढाल बनाओ, नॉट की पूरा बॉडी। ठीक है, ढाल मतलब जो तुम्हें बचाए, भाई अच्छा काम हुआ है तो उसके पीछे ढाल आदमी तो चाहिए। सो नेक्स्ट, किसी को कोई क्वेश्चन? अगेन यस। हॅलो, Yes. ग्रामरलीमध्ये ना कसं होतं, आपण जर ह्युमनाइज किंवा ग्रामर करेक्ट केलं ना आणि ते पेपरमध्ये टाकलं तर एआय डिटेक्ट होऊन जातं, मग ते हे करण्यासाठी मग काय? ग्रामरलीचा मेन पॉइंट काय आहे? ग्रामर करेक्शन. ग्रामर करेक्शन म्हणजे ईचा आर झाला असेल ते, मेनली आपल्याला ते पाहायचं आहे। ह्युमनायझर टूल वेगळे आहेत, ह्युमनायझर टूल परत तुम्ही चॅट जीपीटीवर ह्युमनाइज करता, ग्रामरलीवर ह्युमनायझर नाही करत। ग्रामरलीमध्ये जर काही तुम्ही एखादा ग्रामर चुकीचा असेल, फॉर एग्जांपल तुम्हाला पास्ट, खूप जणांची चूक, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि तुम लोग अभी तुम्हारे रिजल्ट हो चुके हैं रिसर्च आर्टिकल में, तुम लोग क्या करते हो, फाइटोकेमिकल इज प्रेजेंट इन दिस, रिसर्च आर्टिकल में लिखते हो, क्या लिखना चाहिए? वॉज। सो वो चीजें ग्रामरली चेंज करता है, नॉट की ह्यूमनाइजर। अगेन गुड पॉइंट। अगेन व्हाट इज ह्यूमनाइजर? एआई टूल जो जिन्होंने यूज किया है, ह्यूमनाइजर क्या होता है? ते पूर्ण जे आपण सायंटिफिक लँग्वेज असते ना ते थोडंसं आपल्या भाषेमध्ये कन्वर्ट करतो। एक्झॅक्टली, ह्युमन लँग्वेज मध्ये कन्वर्ट करतो, पण ते चॅट जीपीटी आणि जेमिनी नॉर्मली त्याच टूल्सवरनं करतो, तर त्याचा पण फायदा ह्याच्यामध्ये येत नाही, प्लॅगरिझम मध्ये येतो। मी तुम्हाला सांगतो, तर त्याच्यासाठी तेच करायचं, त्याच्याकडनं आयडिया घ्यायची, आपल्या मनाने लिहायचं। थँक्यू। यस यस, नो यस, हेच आहे ना? आपण मग अशी कोणत्या पॉईंटवर होतो? जो पॉईंट आपल्याला व्हाईट बोर्डवर शिकवायचा होता, कुठला होता? रिसर्च आर्टिकल रायटिंग। आर्टिकल रायटिंग लिहायची सगळ्यांना, प्रत्येकाला 2 तासामध्ये, पण ज्यांचं वर्क कंप्लीट झालंय त्यांच्यासाठी, किंवा ज्यांना नवीन करायचंय त्यांना कसं करायचं त्यांना आयडिया येईल। हे वाचा कोणीतरी। काय झालं? लाईट पडते खूप, लाईट बंद करा कोणीतरी। अजून कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर सांगा बिंदास। आय एम आर रेडी, 5 शब्द आहेत का? म्हणजे 5 का ना, त्याला अल्फाबेट माहिती कोणाला काय आहे? कोणी PhD वाला?
कोणीतरी प्रश्न विचारला होता PhD वाला, कोण होता फॅकल्टी? कोणीतरी एक आन्सर द्या मला, आन्सर इम्पॉर्टंट आहे. येस प्लीज माईक द्या त्याला. मी तुला 10 प्रश्न कंटिन्युअस विचारत जाईल. ओके, टेन्शन नको घेऊ. आणि आन्सर झाल्यानंतर सगळ्यात जास्त टाळ्या तुझ्यासाठी वाजतील, हे तुला प्रॉमिस आहे माझं, जसं मी पहिले सांगितलं ना. येस. इंट्रोडक्शन, मेथडॉलॉजी, रिझल्ट अँड डिस्कशन. व्हेरी गुड. चलो आता उभाच राहा. आता सगळ्यात पहिले रिसर्च आर्टिकलमध्ये सगळ्यात पहिला पॉईंट काय असतो? टायटल. बरोबर? टायटल नंतर ॲब्स्ट्रॅक्ट. ॲब्स्ट्रॅक्टच्या अगोदर ऑथर्स. व्हेरी गुड. ऑथर्स. ऑथर्स नंतर ॲफिलिएशन. ॲफिलिएशन. व्हेरी गुड. त्यानंतर ॲब्स्ट्रॅक्ट. नाही, अजून मध्ये. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. करस्पॉन्डिंग ऑथर. क्लॅप फॉर हिम ॲज वेल. करस्पॉन्डिंग ऑथर. करस्पॉन्डिंग ऑथर का इम्पॉर्टंट आहे? ज्याच्या ईमेल ID वरून पेपर जातो तो करस्पॉन्डिंग ऑथर होतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला त्याच्यातलं पण एक डिटेल सांगतो. टोटल 6 ऑथर आहे. पहिल्या ऑथरला सगळ्यात जास्त हायएस्ट पॉईंट असतात तेवढेच, आणि जो सेकंड असतो त्याच्यानंतर कमी कमी पॉईंट होत जातात. नॉर्मली सांगतोय. तुम्ही 6व्या नंबरला आणि करस्पॉन्डिंग ऑथर आहे, तुम्ही आणि फर्स्ट ऑथर सेम असता. काय असता? सेम. त्याच्यामुळं करस्पॉन्डिंग ऑथर इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग ऑथर नंतर ॲब्स्ट्रॅक्ट. त्यानंतर कीवर्ड्स. ठीक आहे. ॲब्स्ट्रॅक्ट नंतर. येस. ओके. येस. या विल डू. ॲक्च्युअली द क्राउड इज डिफरंट वन, दॅट्स वाय. Yeah, okay. If you have any problem or like if you want to change my language as well, just let me know. So we are here seeing here the research article, how we can write the research article. So first important point is Title. Very good. Then Authors. Authors. Then Affiliation. Affiliation, you know everyone? Affiliations म्हणजे जे तुम्ही आहे, फॉर एक्झाम्पल एम.फार्म स्कॉलर, प्रवरा रुरल कॉलेज ऑफ फार्मसी, लोणी, प्रवरा लोणी. ओके. So that is affiliation. After that Corresponding author. करस्पॉन्डिंग ऑथर. आफ्टर दॅट Abstract. इन ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये एक पॉईंट तुम्हाला सांगतो. जे IMRED आहे ते ॲब्स्ट्रॅक्टच्या वेळेस आपण परत एकदा इथे येऊ. पहिले आता पॉईंट्स पाहून घेऊ. हे ॲब्स्ट्रॅक्टच्या वेळेस लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला सांगेल. ॲब्स्ट्रॅक्ट नंतर आफ्टर ॲब्स्ट्रॅक्ट व्हॉट विल कम? Keywords. कीवर्ड्स. आफ्टर दॅट Introduction. देन Methodology. देन Result and literature review वगैरे असं. then research, observation and results. So it comes as a, yeah, you can say observation and results. After D is Discussion. discussion, and one point is added here, last point Conclusion. conclusion. After that one point is remaining. Acknowledgement. Okay, acknowledgement. After that References. references. Don't go for my writing, it's very bad. Okay, got point? Now you have completed your M.Pharm? First year M.Pharm. Okay, you are in first year. Let me assume your work is completed. Okay, everyone assume your work is completed. So what in this, what things do you have? Material method. Do you have material method? Okay, so what you have to do, you have to prepare 5 different files. How many files? 5. First is introduction, second is material method, third is observation result, fourth is discussion, fifth is conclusion. Okay, first prepare that 5 files. References we'll see in the last after finishing of all. First, what you have to do in the second file, you have to prepare 5 raw file. You don't have to write introduction, material method and all. After that, in second file, what you have to do? Material method, just copy paste your work here. Finish? Okay. After that, second file is your result, observation result. You have completed your result. You are assuming, am I right? So you have to write down that result. After that, as per the result, you have to write discussion. Okay, see the sequence.
I am not saying write the abstract first. What I am saying, write material and method first. Okay? Material method, after that observation and result, after that discussion. From discussion you can write conclusion. Okay? Conclusion is over. After that come again to the introduction. Introduction should be in your 3 paragraph. Okay? The first paragraph is the normal introduction. Second paragraph is your particular introduction. And the most important third paragraph is your aim and objective. As I am a reviewer and owner of so many journals, so I can definitely say I can reject or accept article in fraction of second. Because why? Because just I am reading the abstract and the third paragraph or last paragraph of your introduction. From that I get to know your idea. If it is accepted from my side, then I will read full article. Otherwise I will reject in second. Okay? So first what you have done, material method, observation result, discussion, conclusion. Then introduction. Got it? Now from here, you have to add this in a 50-50 word. You know how many words we are writing abstract? 250 words. 250 words. Okay. Now in the 250, divide in 5 parts. Introduction, material method, result, discussion and conclusion. So 50-50 words. So you have to write in 50 words only. So your abstract is completed here. In the IMRAD format, you have to write introduction, then material method, you have to write that word as well. After that, the word is keyword. Every time remember if article is good or not. What we can see, whether keyword are in alphabetical manner or not. Okay, what we are seeing? Keywords are in the alphabetical manner or not. So if it is there, your article is finished. Got my point? It is very easy, but why you are confusing? Because you think article publication is very difficult. It's not like that. You have to give proper approach to write this. What people are doing, they are writing with the abstract. How they can finish their work? Is it possible, ma'am? It is very difficult. We are also doing that mistake in the starting. But now why I give you in the starting, मैं मेरे पैसे दे रहा हूँ भाई तुम लोगों को, तुम लोग क्लाइंट होने वाले थे, लेकिन मैं आज वो छीन रहा हूँ मेरे से, बट उसका तुम फायदा करके लो. मैं बोला था स्टार्टिंग में भी, क्या बोला था? I will give this 1 hour will be your worthy. So this is there. Okay, complete, understood? चलो आगे बढ़ते, टाइम बहुत खत्म हो जाएगा, कैंसिल कर दो और प्रेजेंटेशन पे ले. समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? ओके, सो जोटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. रेफरेंस के लिए है DPI, टेक्स्ट एंड इमेज एनालिसिस फॉर रिसर्च. बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं. पता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ग्राफ में बेसिकली तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट लिख के देना होता है, वहां पे काम आएगा. देन मेटा AI टूल, AI रिसर्च असिस्टेंट. मेटा का 2 मिनट रुक जाओ, टेक्निकल इशू है. किसी को कोई डाउट तब तक? अरविंदास क्वेश्चन पूछो, टेंशन मत लो. और किसी को अभी बोर हो रहा हो, जाना है? यस. रिसर्च में कैसा यूज करते हैं, वहां पे जाना है, आपको जो जो चीजें डालनी है वो डालनी है. आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, AI टूल के नाम बताने वाला हूँ. मैम को बोलना, सर को बुलाओ फिर से, हमें टूल कैसे करने सिखाओ. सर जस्ट किडिंग. सर यस. जोटेरो और मेंडली में क्या डिफरेंस है? जोटेरो और मेंडली, जोटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट का है. रेफरेंस मेंडली से भी देखो अभी क्या होता है, हर एक का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है. चैट GPT में भी वही काम होता है. मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए रिसर्च की बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, जो प्रूवन है मेरे हिसाब से. ठीक है, जोटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट है. देन मेटा AI टूल, AI फॉर एक्सेलरेटिंग साइंटिफिक डिस्कवरी. मेटा AI टूल फॉर डिजाइन टू असिस्ट इन द ऑटोमेशन ऑफ लिटरेचर सर्चेस, हाइपोथेसिस जनरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. मेटा AI टूल भी अच्छा है अगर यूज करो कभी तो. डेटा रोबोट, automated machine learning for research analysis. Data robot helps automate machine learning process, allowing researchers to apply advanced analytic and predictive model to their research data. जो सबसे पहले लेक्चर में सर ने बोला वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है यहाँ पे है. सबका आइडिया आ रहा है? सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया. वही चीज प्रैक्टिकली जो मैं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल पर्सन है तो इंडस्ट्री के हिसाब से सिखाऊंगा, वो चीज है. डू यू हैव टाइम ना?
बिकॉज अभी 40 स्लाइड है टोटल, 17 पे अटके हुए हम लोग. सिखाओ डिटेल में या भगाओ? भगाओ या सिखाओ? ठीक. AI टूल यूज इन द एडवांस स्क्रीनिंग एंड ड्रग डिस्कवरी. ड्रग डिस्कवरी केमिस्ट्री वाले पर्सन बहुत सारे हैं. फ्लेयर, क्रेसेट, अगर ये क्रेसेट डालना पड़ेगा नाम, ये याद रखना. डीप केम, मोल प्रोफेट, साइनर्जी फाइंडर, साइक्लिका, एडिसन, ये सिग्मा रिच जो अगर एम्फाम में काम कर रहे हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल या कोई केमिकल परचेस करते हो गए, तो वो सिग्मा रिच उन्होंने बनाया, उनका भी अच्छा है. पास ऑनलाइन, प्रेडिक्शन ऑफ एक्टिविटी स्पेक्ट्रा फॉर सब्सटेंस और केम बर्ता. थोड़ा थोड़ा बता के जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आया. AI पावर फ्लेयर क्या है? व्हाट इज फ्लेयर? AI पावर 3D स्ट्रक्चर बेस्ड अलाइनमेंट एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग. जो सर ने बताया मॉलिक्यूलर डॉकिंग, वो उसमें से प्रेडिक्टिव होता है. मोल प्रोफेट, एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर डीप लर्निंग इन ड्रग डिस्कवरी एंड क्वांटम केमिस्ट्री. इफ यू वांट यू कैन टेक फोटो एज वेल. Mole Prophet, an AI-driven platform for forecasting the safety and efficacy of potential plant-derived drug candidate. सबसे important चीज़ है, तुम्हें B.Pharm फाइनल ईयर तो हो गई सब लोग ना? नहीं है? कौन से ईयर है? सबसे लेस कौन सा है? फर्स्ट ईयर. उसके बाद थर्ड ईयर. थर्ड ईयर है? मुझे थर्ड ईयर का कोई चाहिए. QSAR क्या है? What is QSAR? Give me answer. You'll get clap for this. Yes, that. Give in mic, please. Someone, please. Sorry, I'm disturbing you, but everyone has to listen. Qualitative structure, activity relation. Very good. Clap for him. Wait. What is that? Important question is here. The chemical part of some compound, how it work in human body. आपल्या मराठीत बोल. नाही कळालं बो मला. एक कोणता ड्रग कंपाऊंड हां, ते पर्टिक्युलर पार्ट ह्युमन बॉडीमध्ये कसा अफेक्ट करतो. प्लांटचा विषय सोडतो मी. तुला केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्रीचा प्रश्न आहे. प्लांटचा विषयच नाही ते. आय एम आस्किंग मेडिसिनल केमिस्ट्री क्वेश्चन, नॉट आस्किंग अबाउट प्लांट. ओके, मैं तुला एक एग्जांपल देता हूँ. मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ. पैरासीटामोल जब इन्वेंट हुआ, वो एक ही कंपाउंड था जो सक्सेसफुली बाहर आया. कितना है सक्सेस रेट? कितना है ड्रग डिस्कवरी का? अरे, ऑल आर फार्मेसी स्कॉलर, एवरीवन हैज टू नो दिस आंसर. व्हाट इज द रेट ऑफ सक्सेस रेट इन रिसर्च डिस्कवरी? 2%. मतलब इसका 2% का मतलब क्या है? 100 ड्रग जो क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं, उसमें से 2 ड्रग पास होते हैं. अभी मुझे चारों फेज अच्छे पता है, लेकिन टाइम नहीं, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं. उसमें मैं QSR क्यों बता रहा हूं? इफ यू आर लैक्स ऑफ कंपाउंड, यू हैव टू रिड्यूस इट टू हाउ मेनी कंपाउंड? 1 कंपाउंड. सो दैट इज QSAR. आपके पास 1 लाख कंपाउंड है, उसका 10 कंपाउंड पे लेके आना है. वो QSR काम करता है. 10 कंपाउंड के बाद आप इन विवो स्टडी करते हो, उसमें से आप 2 मॉलिक्यूल चूज करते हो, उसमें से भी डिटेल सेफ्टी, एफिकेसी, टॉक्सिसिटी स्टडी. वो करने के बाद एक कंपाउंड जो जाता है वो किस में जाता है? क्लिनिकल ट्रायल में. सो अगेन स्मार्ट वर्क इज हियर. ये आपको एक काम हेल्प करेगा, ये आपकी ढाल बनेगा. ढाल उसके बाद आपको चूज करना है कौन सा है. और अभी मैं क्लियर बताता हूं, टॉक्सिसिटी हो AI प्रेडिक्ट कर सकता है, ADME हो AI प्रेडिक्ट कर सकता है. टारगेट प्रेडिक्शन, अगर ड्रग बॉडी में जाता है, वो जाने के बाद कहां कहां एक्ट करेगा वो भी प्रेडिक्ट कर सकता है. और हर चीज के लिए मैं नेचुरल प्रोडक्ट पे आऊंगा तो तुम्हें और मजे की चीज बताऊंगा. चलो, मोल प्रोफेट, अपने पास टाइम कम है, बहुत ज्यादा जा रहा है. Mole Prophet, AI-driven platform for forecasting the safety and efficacy of potential plant-derived drug candidate. Then Synergy Finder, AI tool to identify synergistic effect between multiple phytochemical, crucial for polyherbal formulation. जिसने भी क्वेश्चन पूछा तुम्हारे लिए जाके देख लेना. Synergy Finder. Cyclica, use polypharmacology based AI to predict how molecule interact with the entire proteome. एडिसन सिग्मा ट्रिच का है, दैट कैन यूजेस जनरेट AI एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन. कैड शायद पढ़ा हुआ सबने. फॉर क्या लिखा है? हीट आइडेंटिफिकेशन एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पेसिफिकली ट्रेन ऑन डिकेंड ऑफ प्रोप्राइटरी R&D डेटा. हीट ऑप्टिमाइजेशन
हीट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ एक्टिविटी स्पेक्ट्रा फॉर सब्सटेंस, केमिस्ट्री वाला अगेन तुम्हारे लिए. Algorithm to predict over 3,500 biological activity for a molecule based on its chemical structure, highly effective for deorphanizing natural compound. Camberta, a transformer based model like the ones powering LLM. जो हमने AI बनाया है, that is depend upon LLM, large language model, fine tuned for chemical properties. It can predict bioactivity and toxicity directly from smiles. सबसे पहले सर ने सिखाया स्माइल क्या है, याद है? स्माइल मतलब हंसना नहीं. सब लोग हंस रहे हो, हंसना नहीं है. स्माइल्स मतलब केमिस्ट्री वाला अगेन. यस, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड, नाइस आंसर. जो हम स्ट्रक्चर निकलते वो सिंगल लाइन में आ जाता है, उसको बोलते स्माइली. सी डबल बॉन्ड सी जो भी लाइन में आएगा वो स्माइली हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे. पबकेम वगैरह अगर किसी ने पहले सुना होगा तो उसमें से मिल जाएगा. AI टूल यूज इन द आयुर्वेदा एंड नेचुरल प्रोडक्ट. सबसे पहले तो आयुर्वेद है भाई, हम लोगों ने बनाया आयुर्वेद है, सबसे पहले डालना तो पड़ेगा. We have invented this Ayurveda AI. Not invented, we are prepared. Then Grayu. Grayu is very powerful. If anyone want to work in natural product, Grayu is very powerful. Then TCM-ID, Lotus, NP Atlas, Coconut, Impact, Dr. Duke, Phytochemical and Ethnobotanical database. After that, traditional Chinese medicine system pharmacology. All are AI tool. Cytoscape, string database, Autodoc Vina, पास ऑनलाइन, पबकेम, डेविड, केमबीएल. ठीक है, इसको फोटो ले लो, मैं तुम्हें उसके आगे की बात अच्छे से सिखाओ व्हाइट बोर्ड पे, या ये पढ़ाओ, सिखाओ व्हाइट बोर्ड पे. व्हाइट बोर्ड कर दो. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, लाइक वी गो ऑन फॉर सर आइसोलेशन. हम लोग जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अश्वगंधा, पीपल गो फॉर द आइसोलेशन ऑफ दैट कंपाउंड. यू विल गेट सम मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू डू LCMS, देन NMR एंड द नॉर्मल प्रोसेस. अभी बहुत बार मैम व्हाट हैपन, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स दैट कैन गिव यू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट्स. लाइक अश्वगंधा, 50 molecules are there, so they are already like what already proven that are given in the AI database. So मैं तुम्हें बताता हूँ. कोई भी एक प्लांट का नाम बोलो, अश्वगंधा मत बोलना, दूसरा कोई भी प्लांट का नाम बोलो जिसका काम चल रहा हो सच में. टर्मरिक, वेरी गुड. अच्छा, टर्मरिक से नाम याद आया, मतलब कोई एक पर्सन है जो वेरी रिस्पेक्टेबल है, उन्होंने टर्मरिक अपने पास रिटर्न लेके आया. कौन थे वो? टर्मरिक अमेरिका ने चुराया था, बराबर है? यस यस, उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं. कोई कौन है? अरे फार्मेसी स्कॉलर हो. हु इज द पर्सन हु brings back the patent from US to India? Now we are using the free because of them. सर, अरे तुम्हारे से अच्छा तो बहुत रिस्पेक्टेड सर है, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया. क्या कर रहे हो तुम लोग? रघुनाथ माशेलकर सर, रिमेंबर, हु ब्रिंग बैक द पेटेंट टू इंडिया. ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते. टर्मरिक. टर्मरिक का भी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ जो सबसे फेमस है. वेरी गुड, कर्क्यूमिन. अगर टाइम खत्म हो तो बोलना, मैं अटपते लूंगा. टर्मरिक, अभी टर्मरिक आया, बराबर है? मैं अभी ये चीज बता रहा हूं. क्लासिक्स ऑफ आयुर्वेदा मतलब चरक, सुश्रुत, अष्टांग आयुर्वेद, उन्होंने पहले टर्मरिक के बारे में लिखा हुआ है. दे ऑलरेडी गिवन. सो अगेन हियर कंसेप्ट कम, रिवर्स फार्माकोलॉजी. क्या होता है रिवर्स फार्माकोलॉजी? What is reverse pharmacology? Anyone? Reverse pharmacology मतलब टर्मरिक प्रूवन है, टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रूवन है फॉर एग्जांपल. तो वो क्यों प्रूवन है? अगर लाईक एव्हरीवन, आजीचा बटवा माहिती आहे, खरचटले तुम्ही छोटपणी काय लावायचे? हळद लावायची. हळद म्हणजे काय?
टर्मरिक का लावायची हळद? हां ओके, मग त्याच्यामुळेच तर त्यांनी कर्क्युमिन काढलं ना. तर कसा काढला? त्यांना हळद माहीत होती. रिव्हर्स फार्माकोलॉजी म्हणजे काय की फेज 4चं नाव माहिती तुम्हाला? अच्छा चला आता फेज 4वर आलोच गेलं तर 4 फेजेस सांगून टाकतो. फेज 1 ह्युमन फार्माकोलॉजिक इव्हॅल्युएशन, कंट्रोल क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन, एक्सटेंडेड क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन आणि पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स. बरोबर. चौथी फेज कुठली आहे? पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हिलन्स म्हणजे आपल्या सगळ्यांमध्ये आलेलं आहे. टर्मरिक सगळ्यांमध्ये आलेलं होतं. एव्हरीवन गॉट टू नो टर्मरिक इज यूज ॲट देअर होम. सो टर्मरिक इज यूज. सो रिव्हर्स फार्माकोलॉजी वर्क हिअर. That turmeric is used already. Why turmeric is used? So they have gone from clinical trial to lab, in vivo, in vitro, in vivo, and again it go for clinical trial. Okay, so this is reverse pharmacology. What happened? What we can do normally? We go from lab to clinical trial. Here what happened? We go from clinical trial to again clinical trial through lab. That is reverse pharmacology in simple terms. Okay, so why I am here? Now I want to, the curcumin is 1. I want to know 50 compounds from turmeric. If anyone know? Obviously no. So for that what you have to do? You have to go to Impact website. That is AI tool. Here what you will get? The chemical constituent already present in that particular plant. Got? What the Impact will give? The chemical constituent present in the plant. So now you know the chemical constituent present in the plant. So now what you have to do? You have to check activity. For example, anti-diabetic. So what you have to do? Protein molecule. Anyone know PDB database? What it gives? Protein molecule. So protein means your disease target. So protein means your target. So if you know the target, okay, got my point? Now if you know the chemical constituent, now what you have to do? You have to do molecular docking. Second important point by sir, the pharmacokinetic, that is ADME. In that one important point is that no one will give you this question answer. Lipinski rule of 5. What is Lipinski rule of 5? Anyone know? Yes. Who said yes? Yes. You take mic. Everyone has to understand this. There are 5 rules which are studied in Lipinski rule. First, number of hydrogen donors, number of hydrogen acceptors. There should be 5 number of hydrogen donors should be म्हणजे त्याच्यात पाहिजेत आणि 10 हायड्रोजन ॲक्सेप्टर्स पाहिजेत. लॉग पी व्हॅल्यू असते. ओके, त्याचा ठीक आहे. नाउ दिस ओके, लॉग डी व्हॅल्यू, लॉग पी व्हॅल्यू, लिपोफिलिसिटी. म्हणजे ते एक मीम है ना, कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब लिपिंस्की रूल सर ड्रग का पूरा डेटा बताता है, उसकी नेचर सब बताता है, क्या कैसा एक्ट होता है. लिटरली ही सेइंग, मतलब पार्शियली आंसर, बट क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड आंसर. Really I am saying this. Lipinski rule is giving the whether compound is pharmacologically active or not. You miss the molecular weight. Okay? And the value of log P. So what Lipinski rule is giving? The compound, the chemical constituent is whether pharmacologically active or not. If it is not active, automatically it deletes from that list. Again QSAR concept. How to shift 1 lakh compound to the 10 compound. Here it goes. Okay? So total 42 parameters are there in the ADME. The name is Swiss ADME. Remember this name. SWISS Swiss ADME software. In that you will get to know the ADME of compound, chemical constituent. You have to check for all, for example 50 compounds are there. You have to check 50 compounds.
Okay, after that, what you have to do? You have to check target prediction. Like for example, curcumin is anti-inflammatory. और simple भाषा में बोलता हूँ, अगर आपको headache हो रहा है, if you are having headache, and आपने दवाई ले ली और headache रुका ही नहीं, कोई मतलब है? तो मतलब क्या होना चाहिए? आपका जो ड्रग है वो हेडेक क्लियर कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज टारगेट प्रेडिक्शन. थोड़ा फैन का स्पीड बढ़ा ना, बहुत गर्मी हो रही है. सो टारगेट प्रेडिक्शन. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे? इम्पैक्ट. सेकंड चीज एडीएमए. थर्ड चीज टारगेट प्रेडिक्शन. और उससे सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग करेंगे. उसमें भी हमें पता चलता है वेदर. सिंपल भाषा में बताओ मॉलिक्यूलर डॉकिंग भी क्या होता है. कंसिडर करो ये बॉल है, बॉल को किसी ने हाफ में तोड़ा, कैसे तोड़ा पता नहीं, आगे पीछे हो गया है, अभी वो जोड़ना है पहले अटेम्प्ट में, वेदर इट इज बाइंडिंग और नॉट. जहां पे ये आएगा दैट मीन्स परफेक्ट बाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर डॉकिंग, परफेक्ट बाइंडिंग ऑफ protein and chemical constituent. So it will pass in that test. If it is go like this or like this, no, it is not qualified. So it is deleted from that database. So that's how we can go for the drug discovery through natural product chemistry. Got my point? Okay, simple है भाई. सबसे पहले क्या करना है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं, प्रोटीन निकालना है, जैसे मैंने बताया. थर्ड पॉइंट मॉलिक्यूलर डॉकिंग करो, चौथा पॉइंट एडीएमई करो, पांचवा पॉइंट टारगेट प्रेडिक्शन करो. इससे क्या होगा पता है? आइसोलेशन इज डिफरेंट पार्ट, वो अलग चीज है, जिसको आइसोलेशन करना है वो अलग चीज है. लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर प्लांट पे काम करना है तो एनएमआर में 10-15 हज़ार का खर्चा लगता है, एलसीएमएस में उतना ही खर्चा लगता है, आइसोलेशन में खर्चा ज्यादा लगता है. ये इजीली घर बैठ के सॉफ्टवेयर पे काम हो सकता है. और इसका प्रूवन रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ. मेरा एक पेपर कोविड के पीरियड में पहले 3 महीने में JAIM विच इज आयुर्वेदास नंबर 1 जर्नल, वहां पे पब्लिश हुआ है ऑन दिस सेम डेटाबेस. अगर चाहिए तो आप बस डालना डॉक्टर अभय जयप्रकाश गांधी JAIM या नॉर्मल डालो, तुम्हें पहला ही पेपर कोविड का मिलेगा. वी गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष and they have included that particular drug in their treatment protocol in that first 6 months. We got, yes, in the first 3 months the paper is published. That's why they have, like, they gave us the later, that appreciation letter, that your drug is selected for the treatment protocol from the Ayush department. So yeah, so this is then got everyone. Natural समझ में आया सबको? नेचुरल प्रोडक्ट किसको ज्यादा है? कोई क्वेश्चन? क्लियर कर दो, प्रेजेंटेशन मोड पे लाओ. मैं अभी तुम्हें शायद टाइम हुआ है, भगाना तो पड़ेगा. शुड आई फिनिश? So many. Actually all are AI tools now, that's why. And I have prepared this PPT myself, and I have prepared 2 PPT. I gave you this because I want to give you the practical aspect. That 3 people asked question na, after that I changed my PPT. I sent the another one. I don't know what is the, like you are all are excellent people. That's why I choose the excellent PPT here. Okay. मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वर्दी लग रहा है? सबसे पहले बोला था मजा आ रहा है ना? सच में फालतू नहीं गए ना? 1 घंटा, 1 घंटा होके गया बाय द वे. सो इसके एक फोटो ले लो, मैं थोड़ा ये अभी भगा देता हूँ. आयुर्वेद है भाई, सब लोग नाम याद रखो, मैंने बनाया हुआ है. ग्रायु का मैंने बोला, उसमें 1200 प्लांट, 12,000 प्लांट, 1,000 फॉर्मुलेशन और 1,30,000 फाइटोकेमिकल डेटा है. ये भी अच्छा है. इम्पैक्ट का मैंने बोला, इम्पैक्ट में सारी चीजें अच्छे से दी हुई है, वो भी याद रखना अच्छे से. चलो ये थोड़ा सा मैं अभी भगाता हूँ. ADMET लैब 2.0. अगर टॉक्सिसिटी किसी को चेक करना है कोई प्लांट का, तो भी चेक कर सकते हो. ADMET 2.0 सॉफ्टवेयर से. ड्यूक फाइटोकेमिकल, अगर इम्पैक्ट बहुत बार सर्वर इशू होता है तो तुम ड्यूक भी इस्तेमाल कर सकते हो. डॉक्टर ड्यूक्स फाइटोकेमिकल डेटाबेस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. Again, if anyone want to work on Chinese traditional medicine, if you have any question, you can ask me directly. You can ask me directly. Please don't disturb me. Otherwise, I will forget my link. Cytoscape. That I think that girl asked that question. In Ayurveda research, it is used to create herb compound target disease network.
ओके, स्ट्रिंग डेटाबेस प्रोटीन का है, ऑटोडॉक वीना शायद जो मॉलिकुलर डॉकिंग करते हैं उनको पता हो, पास दैट इज फॉर द मॉलिकुलर डॉकिंग बेसिकली, पास ऑनलाइन, इट प्रेडिक्ट 4000 टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सबसे जो चीज आपको चाहिए थी, सुननी थी, भाई एक्टिविटी कैसे चेक करते, ले लो तुम्हारा आ गया, पास ऑनलाइन, वेट टू ड्रग, इट कैन प्रेडिक्ट हाउ मेनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, 4000, and this is not claimed by me, this is claimed by that software. If anyone want to check whether ashwagandha and from that this particular drug is doing anti-diabetic or not, if it is not here, definitely I will let you know, it will not work in your in vitro as well. That's why they are teaching you in medicinal chemistry in 3rd year, why they are teaching you QSAR. You will think it is for no use. No, it is for useful. But for that, the person like in the industry will help you to teach this. Okay? PubChem, I think everyone know, David database for annotation, visualization and integrated discovery, inflammation pathway. KMBL शायद पता हो सबको. Now comes to अगर कोई मेटाबॉलिक्स में और स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन में काम करता है, किसी के पास LCMS का डेटा या MS का डेटा है, इंटरप्रेट कर सकते हो विदाउट डेटाबेस? अच्छा, कौन किसी ने किया है काम, जेन्युइनली मुझे बताओ तो और तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, अदरवाइज आई विल स्किप दिस एंड विल मूव फॉरवर्ड. ओके, मूव फॉरवर्ड. सीरीज 6 XCMS ऑनलाइन, मेश ट्रेर नोवा, एमनोवा, GNPS ग्लोबल नेचुरल प्रोडक्ट सोशल मॉलिकुलर नेटवर्किंग, स्पेक्टू क्लास, स्पेक्टू वेक और डेसिमर. Series 6 a leading AI tool for molecular formula and structure prediction from mass spectroscopy data. क्या होता है पता है, LCMS जब करते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जहां से आप MS करते हो वहां पे आप बोलते नहीं हो कि हमें लाइब्रेरी में से भी आंसर निकाल के दो, उसके पैसे अलग लगते हैं, कोई बताएगा नहीं आपको. अगर उसके पैसे अलग लगते तो पैसे लेगा, लेकिन आपने बताया नहीं, वो छोड़ देगा. अगर वो उनके लाइब्रेरी में से निकल गया हो तुम्हें वो रिपोर्ट जीरो यूज, ऐसा पहले समझते थे हम लोग. नाउ ये सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास नहीं है तो वो उसमें से फाइंड आउट करके देगा कौन से कंपाउंड है. MS बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बिगड़ी हुई चीज है, उसको बहुत अच्छे से बच्चों की तरह संभाल के कौन से स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ता है. XCMS ऑनलाइन, अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग मेटाबोलोमिक फीचर यूजिंग मशीन लर्निंग. Mesh Trenova, advanced NMR and LCMS, GCMS software with automated AI driven structure verification. Structure verification we can do from Mesh Trenova, GNPS and AI integrated ecosystem for sharing and analyzing raw mass spectroscopy data. Spec2 class, a deep learning tool that classify plant secondary metabolite directly from LCMS spectra with how many % accuracy? 93% accuracy. जिनको पता नहीं उनको कुछ नहीं लग रहा होगा, अगर जिनको पता है MS का अगर स्ट्रक्चर अटका तो तुम्हारा स्ट्रक्चर, तुम्हारा जो ग्राफ है वो कोई काम का नहीं. ये चीज याद रखना, आगे जाके भी याद आएगी. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का ये करना है तो उसके सॉफ्टवेयर है, इवन विदाउट अ रेफरेंस लाइब्रेरी. Spec2 वेग, an AI algorithm that learn word-like representation of mass spectrometry peaks to identify compound structure, improving similarity scoring by up to 30% over traditional method. Decimer, an AI tool for chemical image recognition. It can scan various chemical structure from old Ayurveda journal or PDF book and convert them into machine readable data. That is smiley. Now, किसी ने तो भी genome mining बोला था क्या? बता नहीं, याद नहीं. So genome mining and biosynthesis. Anti-Smash 7.0, Scientist, Big Slice, Jico, Deep BGC, NP Linker और Deep RIPP. ये सब टूल बता रहा हूँ, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ. ये मैंने खुद बनाई हुई PPT है. कोई फॉर एग्जांपल आपके भाषा में बोलूँ तो क्या बोलते, चोरी नहीं की हुई है, ये खुद बनाई हुई है मेहनत लेके. किसके लिए बनाई है? आपके लिए. Anti-Smash, the gold standard for identifying biosynthetic gene. Scientist, a tool that uses neural network to improve the accuracy of BGC. BGC मतलब biosynthetic gene cluster. Big Slice, an AI powered tool for clustering massive genomic data set into gene cluster families. कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, लेकिन जिनका काम है उनके लिए हर चीज आपके लिए काम नहीं आएगी. Something is useful for you. Deep BGC, use deep learning to identify biosynthetic gene. NP Linker,
an AI framework that integrate omics data, sir ने सिखाया था, linking genomic BGC to actual metabolite found in the lab, helping researcher understand which gene produces which Ayurvedic compound, ये भी काम का है. Deep RIPP, specifically designed for discovering ribosomally synthesized and post-translationally modified peptide, a critical class of bioactive natural product. AlphaFold 3, while famous for general biology, now it can be used for how natural product inspired molecule bind to complex multi-protein system. किसी ने डॉकिंग पे काम किया है, प्रोटीन पे काम किया है, मल्टी प्रोटीन पे काम किया है, उनके लिए काम का है. NVIDIA Biogenome, a cloud-based generative AI platform for generative biology that help researcher design new protein. जो लोग सोच रहे थे भाई हम लोग प्रोटीन कॉपी करेंगे, अगर तुम्हें नया प्रोटीन खुद का बनाना है, कोविड आया तो कोविड का मॉलिक्यूल था, कोविड का कोई चलो एक ये, अगर कोई कोविड का एक पीडीबी मॉलिक्यूल मुझे बताएगा, उसको 1000 रुपए अभी ऑनलाइन. 1 2 3 छोड़ो 6LU7, अगर किसी को याद होता तो बोल देता था, मैं पैसे भी देता था. पैसे निकल जाते तुम्हारे, थोड़ा सा पढ़ लिया करो अच्छे से, ठीक है. डिफ्यूजन मजाक में चल रहा है, सब टेंशन मत लो. पैसे देता था मैं सीरियसली. A diffusion based generative AI model for molecular docking that predict the 3D binding pose of a natural product within a human protein target with high speed and accuracy. AI tool used in the identification and quality control, LeafSnap, PlantNet, Sapioilen आणि LifeBeat. इजी है. क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई काम कर रहा है तो उनके लिए AI ड्रिवन कंप्यूटर विजन टूल फॉर द इंस्टेंट टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. चलो सिंपल और एक मजे की बात बताता हूँ. फोटो कैप्चर करो, डालो इधर, वो नाम बता देगा. सुन हो गए सब लोग तो शांत हो गए, अभी तो गप्पे मार रहे थे. प्लांट का फोटो, कोई भी प्लांट का फोटो लो, डालो इसमें सॉफ्टवेयर में, वो तुम्हें बताएगा कौन सा टैक्सोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या नहीं मजे की बात. इसलिए इंडस्ट्री को आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. क्या क्या देखो, बॉटनिस्ट का ऑथेंटिफिकेशन तुम्हें एज अ रिसर्चर जरूरी है. तुम बोल रहे हो ये है, वो बोल रहा है वो पर्टिकुलर प्लांट है, प्रूफ कौन देगा? अथॉरिटी देगी ना. तो अथॉरिटी देगी तो फिर करना ही पड़ेगा ना. कौन देता है? चलो उसका भी एक क्वेश्चन था, उसका डबल क्वेश्चन. ऑथेंटिकेशन कौन करता है प्लांट का? कौन, किसका अप्रूवल चलता है नेशनल लेवल पे? Very good. BSI, Botanical Survey of India. It is situated in only 4 offices, I think. Pune, Kolkata, and 2 other offices are there. So we need their stamp that it is certified as a particular this plant. Then only it can, like if you go for Springer or any other journal, they need. Obviously, ma'am, you know, but I'm just adding the point. Then Sapio, an AI platform that integrate lab informatics with chromatography to ensure herbal quality control. चलो chromatography किसको पता है? हर्बल में की है किसने क्रोमेटोग्राफी की है? माइक दो उनको. क्या होती है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है. उसमें एक स्टेशनरी फेज होता है, उसमें एक मोबाइल फेज होता है. स्टेशनरी फेज पे हम जो अपना एक्सट्रैक्ट है उसका मतलब कैपिलरी से ड्रॉप डालते हैं और फिर मोबाइल फेज में रखते हैं और फिर वो RF वैल्यू देती है. वेरी गुड, क्लैप फॉर हर. Why I wait for here, you know, why like till RF value? Because people don't know what value we are getting. She give the right answer from HPTLC, TLC or any other chromatography we are getting RF value. And in HPLC what we are getting? I haven't done HPLC yet. Anyone HPLC will get clap for you if anyone give answer properly. One opportunity is there. Yes, you know? Anyone? M-Farm? अरे HPLC में कौन सा क्या मिलता है आंसर? Instead of RF what you are getting? Ma'am is giving clue. She is giving your side.
At least now. Yes. Very good. Clap for her. Very good. We are getting retention time from HPLC and retardation factor from HPTLC. Very big difference. That's why I clap for both of them. Sorry. LifeBeat, a platform for secure AI-powered analysis of genomic and phenotypic data at scale. AI tool used in knowledge synthesis and simulation. LCIT and Redo. LCIT, what it can do? It can assist the automate literature review. It can analyze thousands of scientific paper on a specific herb. For example, Tinospora cordifolia. घर के नजदीक में कभी देखा हो, गुडूची. And synthesize the finding into a data table. Redo क्या करेगा? Allows for the AI-driven reanalysis of public mass spectroscopy data, helping researcher find where natural products have been hidden in a previous studies. AI tool used in the knowledge synthesis and simulation. ठीक है ये एक फोटो अगर चाहिए हो तो ये पूरा जितने मैंने ये किए ना ये है पूरा कॉम्बिनेशन. चलो अभी यूजुअली लेक्चर में लास्ट में क्या होता है पता है? कंक्लूजन. बराबर. मैं आपसे चाहता हूं भाई आज के लेक्चर का कंक्लूजन आप लोग ही दो. यस यू. यस प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए अच्छे से. तारीफ मत करना, कंक्लूजन देना लेक्चर का. Hello. Sir, first of all, my name is Moin Mehboob Qazi. I am from VK Patil College, Nagar. Sir, मेरा फिलहाल रिसर्च चालू है. केमिस्ट्री में एंटी कैंसर स्टडी कर रहा हूँ. तो फिर उसमें जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो फैक्टर्स थे जो कि एआई टूल्स आपने बताए तो ये सब फैक्टर्स मेरे लिए नए थे, मुझे कुछ भी पता नहीं था. तो इसमें से जो नई चीज़ें जैसे कि IMRAD क्या है, वो फॉर्मेट क्या होता है, बाद में अलग अलग जो आपने टूल्स बताए तो उसके यूजेस क्या होंगे, उसका फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग क्या होगा, वो सब आपने बताया. उसके बाद सॉफ्टवेयर्स बताया आपने कि ChatGPT हम लोग सिर्फ ChatGPT, गूगल जेमिनी ये जो पॉपुलर जो भी है वही यूज़ करते हैं. तो उसके अलावा भी कुछ टूल्स होते हैं जैसे अपने ऑथेंटिफिकेशन के एक बारे में बताया. मैं शॉक हो गया, मुझे मतलब आइडिया नहीं था ऐसा भी हो सकता है ये के यूज़ से. तो वो भी मेरे लिए इंफॉर्मेटिव था. तो एज अ रिसर्चर और एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बड़ा मिरेकल है जो कि AI आज कर रहा है और ये मुझे इंफॉर्मेटिव लगा. और आई एम वेरी इम्प्रेसिव फ्रॉम योर सेशन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल to you sir to give the opportunity to and to take the guidance for my research, and thank you so much sir. Thank you. Any conclusion from girl side? Because I have written the conclusion but I don't want to read only that. So anyone from girl side to say conclusion? अरे मुली आजकाल तर सगळ्यात पुढे आहेत यार. मुलांना पाठीमागे म्हणजे मुलं पाठीमागे टाकतील. उठा एक जण. कोण आहे PhD मधला आहे कोणी? कोण आहे? येस. पण शेवटचं स्पीच नाही ना इथलं? तिथलं स्पीच नका बोलू. आय एम सेइंग डोंट स्पीक दॅट लास्ट स्पीच अदरवाइज. हॅलो. जस्ट किडिंग. नाही सर, तिथलचं स्पीच पूर्ण आपलं जे असेल प्रोफेशनली असेल. हे जे स्पीच जे असेल म्हणजे कन्क्लुजन सांगेल ते ॲक्च्युली मला खरंच काय वाटलंय तुमच्या सेशनमधून ते नक्कीच असेल. म्हणजे सर आतापर्यंत आम्ही भरपूर सेशन वगैरे केले बट सगळे जो स्पीकर जवळपास येतात खूप छान माहिती पण सांगतात, पण माहिती जशी डोक्यापर्यंत जायला हवी ना तशी जात नाही. कारण की आपण स्टार्टिंगला खूप इंटरेस्टेड असतो, आपण स्टार्टिंगला खूप लक्ष पण देतो, ऐकतो सगळ्या गोष्टी, आपल्याला आवडतात ही गोष्टी, थोडंफार हे करतो. पण ज्यावेळेस अर्धं सेशन होतं त्यानंतर आपल्याला बोर व्हायला लागतं. बट तुमचं जे सेशन होतं तुम्ही बोलले की 1 आवर जो असेल तुमचा वर्दी राहील, पण मी म्हणते 1 पेक्षा जास्त आवर आमचं वर्दी राहिलेलं आहे. आणि जे 10 आवर्समध्ये आम्ही जे काम करतोय ना ते नक्कीच आम्ही हाफ आवरमध्ये आता कम्प्लीट करू. आणि ॲज के मी स्वतः आता M.Pharm फार्माकोग्नॉसीची स्टुडंट आहे प्रवारा कॉलेजचीच. तर मग सर नक्कीच हे जे सॉफ्टवेअर आणि हे जे सगळे काही तुम्ही सांगितलेले आहेत ॲप्स वगैरे ते आमच्यासाठी खूप युजफुल राहतील. थँक्यू सो मच सर फॉर दिस. थँक्यू.
So I would like to thank Principal Ma'am and Bhavar Sir to मला इथं बोलवलं. मला ॲक्च्युली कंठ दाटून आलं सर. ॲक्च्युली थँक्यू, मला इथं बोलवलं, मला त्या लायक समजलं. थँक्यू सोमेश्वर सर. येस, सगळ्यांना ऐकायला जाईल. येस, नो नो इश्यू. Hello. Sir, for interpretation for any structure, for coming to the conclusion for any phytochemicals, we need help of mass, NMR, IR, UV. Is there any AI tool? We have told many tools, but for mass, LCMS, there are the different tools. Is there any tools? In one tool, we can interpret all the graphs? नो सर. फॉर एव्हरी मी एक नॉर्मली सांगतो सर तुम्हाला, प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळी गोष्ट आहे. मी आत्ता इथे 50 टूल सांगितलं आहे. 50 टूल सांगायचा अर्थ काय होता माहिती आहे का? प्रत्येकाकडं काहीतरी आहे. फॉर एक्झाम्पल आता ChatGPT पण आहे आणि जेमिनी पण आहे. ठीक आहे, मी आन्सर सगळ्यांना म्हणजे हे करतो. ChatGPT आणि जेमिनी आहे. मी एक प्रश्न विचारेल, त्याचा आन्सर द्या. दोन्ही चांगले आहेत? जोरात आवाज द्या. इमेजसाठी कुठला सगळ्यात चांगला आहे? ChatGPT नाही आहे सर. त्याचा आन्सर हे की प्रत्येक टूलचं एक आपलं वैशिष्ट्य आहे. जसं मी आता सांगायचं साधा पॉईंट का, जेमिनीमध्ये नॅनो बनाना आहे सगळ्यात चांगले. म्हणजे तुम्ही लोगो पण टाका सर, इंडस्ट्री लेवलपेक्षा भारी लोगो येतात आहे. आता त्यांनी तसं सॉफ्टवेअर बनवलं आहे. सो जे मी ते LCMSचे पण सॉफ्टवेअर सांगितले, प्रत्येकाचे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर आहे आणि प्रत्येकाचं काम वेगवेगळं आहे. काय होतं बऱ्याच वेळेस तुम्ही LCMSमध्ये काम केलं असेल तर आपण निश लायब्ररीमध्ये घेतो. मुलं काय करतात, निश लायब्ररी घेतच नाही कारण त्याचे पैसे लागतात एक्स्ट्रा. What happened, ma'am? In the LCMS, most of the people are lacking niche library. They are not taking that particular. Generalized list, but they are giving the proper structure. What are the prediction from that particular RT time, retention time. But if it is not there, the niche library with you, what you can do with that report? It is non-use. So for that AI is here now. That's why. There are lots of, but they are already they have niche library in the back end. So that's why they are taken that data from the niche library and they are giving you. But normally what happen, you go there and you can ask for niche library. They will give you the prediction. Again, सगळ्यांसाठी अगेन इम्पॅक्टनी काय केलेलं आहे, ऑलरेडी जे प्रेडिक्टेड आहेत ते टाकलेले आहेत, जे प्रूव्हन आहेत. जे LCMS मध्ये करतो ते प्रूव्हन नाही आहेत, ते फाइंड आउट करायचे आहेत. ते फाइंड आउट बऱ्याच वेळेस चुकतं. वी आर लॅकिंग इन दॅट पर्टिक्युलर इंटरप्रिटेशन. दॅट्स वाय वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम AI टूल्स. ओके, दे आर आस्किंग फॉर ऑल चार्ट्स वी आर हॅव्हिंग एनी सिंगल टूल्स. What area? That's why I ask whether ChatGPT or in Gemini, which is the tool for the image generation. Gemini. Why not ChatGPT? But what are the excellent tools I have given here? Okay. Next question. कुठल्याही लँग्वेज मध्ये विचारा, घाबरू नका, बिंदास विचारा. माईक घ्या फक्त, सगळ्यांना ऐकायला जाईल. आणि का मी प्रत्येक वेळेस माईक सांगतो माहिती का, लास्ट आणि फर्स्ट सगळ्यांना ऐकायला गेलं पाहिजे आणि मला पण. सर आपने बताया कि LCMS या GCMS के जो AI टूल्स है वो डेटा इंटरप्रिटेशन ग्राफ इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो फिर इंडस्ट्री लेवल में इस AI टूल्स का यूज़ होता है क्या? नहीं होता अभी. नहीं होता है क्योंकि उनके पास क्यों नहीं होता? उसका जो फादर है निश लाइब्रेरी वो है. तो उसने पेटेंट किया है क्या? वो पेटेंट नहीं किया है. वो क्या होता है, जैसे जैसे कंपाउंड प्रूवन होते हैं एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. बाइक चलाते हो जी, बाइक का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, नंबर प्लेट है जी, जी. नंबर है उसका MH16 आई थिंक 16 ही होगा ना. MH14 है. 14 है, ठीक है. MH14 मतलब पिंपरी चिंचवड़ का. पिंपरी चिंचवड़ में इससे पहले जितने लोगों के हैं वो पहले का डेटा सेट है. जो नई गाड़ा ऐड हो रही है वो ऐड होते जा रही है. वैसे ही निश लाइब्रेरी भी है, उसमें कंपाउंड ऐड होते जाते हैं. इसीलिए इंडस्ट्री लेवल पे निश लाइब्रेरी जो LCMS के लिए है वो काम आती है. LCMS एक पार्ट है MS के लिए, बेसिकली मास स्पेक्ट्रा. सर LCMS के लिए ये टूल्स है, तो फिर H1NMR C13NMR उसके लिए कोई टूल्स नहीं? सेम यूज होते हैं उसमें. जो LCMS के टूल है उसमें होते हैं
और उसके भी NMR एक्चुअली तुम लोगों को ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग भी अवॉइड करते हैं यूजुअली NMR का क्या होता है, टूल्स वो खुद ही बोलते हैं भाई लेके जाओ बाद में पछताओगे। जब NMR लेते हैं ना, उनकी जो लाइब्रेरी है वही पावरफुल है। LCMS में बहुत मैंने किस्से देखे जो भूल गए लेना या बोलते नहीं है बेसिकली लैब वाले, तो दिक्कत आती है, इसीलिए स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया मैंने। थँक्यू सर. भवर सर, मुली काही विचारत नाही प्रश्न, काय झालंय मुलींना? इकडच्या मुली म्हणजे हे नाही करत आहे? मैम बोल रहे हैं बस बच्चों को ही अलाउ किया है, लड़कियों को नहीं किया। यस, चलो क्लैप फॉर हर, एटलीस्ट शी शुड, और बोथ। थँक्यू सर. विचारते ती प्रश्न, एक सेकंद झालं का? नाही ती प्रश्न विचारते. अच्छा मला वाटलं अच्छा तिकडनं बोलली का? My question is very basic. Sir, is there any AI tool in which if we give it a name of any synthetic drug or synthetic drug or API, so it will give us the relevant names or the other herbal herb compounds that will show the similar pharmacological activity. बहुत खूप सारे इम्पॅक्ट मध्ये पण मिळून जाईल. आणि सर मीन्स ते कंपॅरिझन देऊ शकते की हर्बल कोणत्या वेने बेटर आहे किंवा सिंथेटिक कोणत्या वेने बेटर आहे? बघा त्याच्यासाठी तुम्ही जो प्रश्न विचारता तो जनरलाइज क्वेश्चन आहे की ह्यातला कुठला चांगला, त्यासाठी ChatGPT चांगला आहे. सिंपल, मी तेच माझा सांगण्याचा पर्पज तोच आहे. सायंटिफिक बेसिसवर पण ChatGPT आन्सर देतं. मी असं कधीच बोललो नाही, मी ChatGPT इन्क्लूड पण केलेलं आहे. जर ह्याच्यामध्ये पहिल्यामध्ये पाहिलं तर ChatGPT आन्सर देतं. मी तुम्हाला काय म्हटलं, जनरल कॅटेगरी मधला आन्सर आहे. तुमचा प्रश्न जनरल कॅटेगरी मधला होता, त्या 20 पैकी मी तुम्हाला जनरल कॅटेगरीचा आन्सर दिला. ओके, ठीक आहे, तू स्पेसिफिक आन्सर विचारा, मी स्पेसिफिक आन्सर देईल. एक वन लास्ट क्वेश्चन, आय थिंक ती अशी आजच. Last question. Hello. As already we have led by more than half an hour. Sir, as molecular docking is performed for the preliminary predictions, so can AI personalize predictions based on patient-specific factors like genetics and lifestyles? जेनेटिक और लाइफस्टाइल ये अलग चीज़ है. मॉलिकुलर डॉकिंग का सबसे बड़ा फंडा क्या है? मैंने आपको क्या बोला, मॉलिकुलर डॉकिंग के लिए कौन सी 2 चीज़ें चाहिए? सब लोग बताओ, कौन सी 2 चीज़ें चाहिए मॉलिकुलर डॉकिंग के लिए? पहला प्रोटीन, दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. प्रोटीन मतलब डिसीज. डिसीज इज नॉट अ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मतलब कि आप मतलब लेट उठ रहे हो तो आपको कुछ मतलब या वेट बढ़ रहा है आपका. डिसीज मॉलिकुलर डॉकिंग क्या आंसर रहेगा? ये मतलब उसका क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि थिंक अबाउट दैट कि हम कौन सा चीज किस चीज के लिए कर रहे हैं. शी इज आस्किंग वेदर द लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल इज वी कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द मॉलिकुलर डॉकिंग. So in molecular docking, 2 points are important. One is protein molecule, which is the disease, and second is the ligand. So it is a chemical constituent. So it is not included lifestyle. So genetics? No. They are different because they are gene. Again, gene. I told you here in the AI tool from genomics. Both are different. Okay. Thank you, sir. She's told last time. So okay, ma'am, please one last. Sorry, one last question. Sorry. Yeah, one more. Hello, sir is with us. That's what. After lunch break also you can ask questions. Sir is there because we are running short of time. We have other presentations also. We have to go for food also. So is it okay? Yeah. Yeah. Before concluding, really thank you to Bhavar sir and Principal ma'am for giving me this opportunity, and specifically Sunanya ma'am, Someshwar sir for timely proper communication. I am really happy with their mode of fear. Yes, thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for briefly explaining all the questions. I, Pratiksha Kare, I give the immense pleasure to propose the vote of thanks for today's enlightening session. On behalf of Pravara Rural College of Pharmacy, Loni, I extend a heartful gratitude to
Dr. Abhay Gandhi sir for delivering such an insightful and thought-provoking session on AI's tool in natural product research. Your talk was truly broadened our understanding of how artificial intelligence can transform the natural product research and bridges the traditional knowledge and perspective. You shared today's are extremely valuable for us. Thank you, sir. Along with this, I would also like to express my sincere thanks to our respected principal ma'am, our manager, conference organizing committee, faculty, coordinators and all the delegates for their active involvement in making this grand success of morning session. Thank you all. Thank you, Pratiksha. Thank you, sir. So now we will be taking lunch break for around 45 minutes till 1:40. Whoever are the participants for e-poster and oral presentation. Okay. So they will gather in the oral presentation and e-poster halls. Our volunteers will guide them in our college building. ज्यांचं कुणाचं ई-पोस्टर प्रेझेंटेशन आणि ओरल प्रेझेंटेशन आहे त्यांनी 1:40 पर्यंत लंच आवरायचं आहे तुमचं. आणि कॉलेज बिल्डिंग, फार्मसी बिल्डिंगमध्ये तिथे व्हॉलेंटियर्स आहे. तुमच्या ग्रुपवरती डिटेल्स आलेले, तुम्हाला कोणता हॉल दिला आहे, व्हॉलेंटियर्सची हेल्प घेऊन तुमच्या रिस्पेक्टिव्ह क्लासमध्ये गॅदर व्हायचे. 1:40